मागता कुर्चोरेम क्रिकेटर्स कॅप्टन हांगा तुमची वेट जाता रावतात. कॅप्टन विकास देसाई. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. तर सांगेम क्रिकेटर्सान आयोजित केल्ली ही टुर्नामेंट आणि आज ह्या टुर्नामेंटाची फायनल दोन नंबरांतली बरी टिमी जिनो ड्रॅगन्स आणि एक कुर्चोरेम क्रिकेटर्स. फायनल जो सामनो काही खिणान हांगा सुरू जातलो त्याच सामन्याचे टॉस हांगा दोन कॅप्टन जे आसा तयार आसात. साहिल धुरी जिनो ड्रॅगन्स आणि एक कुर्चोरेम क्रिकेटर्स विकास देसाई. Okay. Yes, stick. Sanguem. कितले भायर वयता? Hello, hello. सको- तो चॅनल चेंज ही करायचे. वाईडलाईन न्ही, ही गाईडलाईन फॉर अस. हा चॅनल चेंज करपाक तीन चॅनल पुढे वर. गाईडलाईन शिफ्ट जावं गाईडलाईन
विदिन द रीच असं जाल्यार तो काम दिवंक शकना न्ही ताका पूण पूण रिटर्न कितें केल्यार हय हय ती जाता ते डिपेंड वयतली वयतली पूण अंपायर कशी हे करता तेजेर आसा हॅलो. सफल जाता तेजेर आसा हय तसो सो दोन एम्पायर आमचे हांगा रेडी कॅप्टन कास देसाई आणि साहिल धुरी कॅप्टन दोन्ही टॉसा खातीर तयार. सो फायनल मॅचीचो टॉस हांगा and heads is the call and head. So साहिल तुम्ही इम्पॉर्टंट मॅच एक फायनल या टुर्नामेंट जो इतली जाला सो आयज टॉस जिखून कितें करपाचो निर्णय आनी कित्याक लागून पीच बरी दिसता बॅटिंगेंगूय फेवरेबल आसा कंडिशनूय आनी आमी सगल्यो मॅची बॅटिंगूच करीत आयला फर्स्ट सो वी आर कम्फर्टेबल बॅटिंग फर्स्ट सो बरो स्कोर एक टार्गेट दिवंक सोदता तांकां सो दॅट वी कॅन रिस्ट्रिक्ट देम. सो तुमकां तेंची बॅटिंग लायनअप पयला एक स्ट्रॉंग बॅटिंग लायनअप आसा तुमकां कितें दिसता की कितलो स्कोर जो आसा हांगा तुमी डिफेंड करपाक शकतले. तेंची बॅटिंग लायनअप स्ट्रॉंग आसात म्हणून तेय फायनलीक पावला सो आमची बॉलिंग लायनअप मातशी बॅटिंग पेक्षा चड स्ट्रॉंग पॉयंट आसा सो फर्स्ट बॅटिंग करून जितको आमी स्कोर काडटले ते आमी डेफिनेटली डिफेंड करतले. ओके थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट फॉर दीस फायनल. सो टॉस तुमी जरूर हारले पण तुमचें डिसिजन कितें आसतलें जर तुमी टॉस जिखले. आमी सुद्दां बॅटिंगच करपाचें. इट्स अ बीग गेम फायनल मॅच पुटींग रन्स ऑन द बोर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दीस टायप ऑफ मॅचीस. ओके आतां तुमी जे तेन्ना बॅटिंग करतले सो तुमची कितली टार्गेट आसा किंवा कितली म्हळ्यार तुमी रिस्ट्रिक्ट करपाक तेंका सोदतले. They are very good side. They have got a very good lineup. We will try to restrict them as less as possible. We'll try to stick to the basics and let's see what happens. Okay, all the best for these finals. And the news from the center is that Geno Dragons won the toss and they have elected to bat first. पळय विकी विकी
So that is the beginning for the final, and wide is the signal. So 2 continuous wide deliveries takes the team total to 2. So power play is on. Shubham Naik and Ninad Pauskar are the openers. So definitely, last time it was Rahul Keri, and now in the finals it is Ninad who is opening for Geno Dragons. Meanwhile, cuts the ball away from the fielder, but there's a deep point fielder patrolling the fence. So steady start by So meanwhile, that is a welcome boundary from the bat of Ninad. That was hit towards the point fielder as we are watching the replay. So meanwhile, a dot delivery. Meanwhile, a big swing. Dipraj Gaukar bowling the first over of the inning. पहले ओवर प्रगति पर दीपराज घावकर यहाँ पर अब तक का ये ओवर कमाल का सटीक लाइन और लाइन के साथ इस ओवर की शुरुआत। बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला सांगेम क्रिकेटर्स। इस बार यहाँ पर बढ़िया, और ये गेंद यहाँ पर सीधा जाएगी 4 रनों के लिए। तो दूसरी बाउंड्री आती हुई इस ओवर में और पैरों पर गेंद फ्लिक किया इस गेंद को। उसी के साथ पहले ओवर की होती हुई समाप्ति। 11 रन लग चुके बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। तो दीपराज गावकर के पहले ओवर 11 रन इस ओवर में आए और एक अच्छी शुरुआत यहां पर कही जाएगी जीनो क्रिकेटर्स के लिए। 11 रन पहले ओवर के बाद। तो सेमीफाइनल की जो मैच हुई थी वहां पर कमाल की गेंदबाजी की थी दीपराज, और उसके बाद चंद्रेश यहां पर जो अहम विकेट थी उस विकेट को अपने नाम करने में कामयाबी मिली थी। उस मैच में अमित हमसेकर एक बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज, वो अहम कड़ी थी उस विकेट को यहाँ पर अपने नाम करने में कामयाबी मिली थी पिछले मैच में। और इस मैच में भी एक बढ़िया यहाँ पर शुरुआत, एक विकेट यहाँ पर जरूर कप्तान चाहेंगे। पहले ओवर के बाद 11 लग चुके बोर्ड पर और दूसरी ओवर की यहाँ पर शुरुआत करेंगे चंद्रेश देसाई। और पहला फ्री हिट यहां पर लेना चाहते हैं और 5 फ्री हिट यहां पर ले सकते हैं बल्लेबाज इस इनिंग में। ओ यहां पर हवा में गेंद है, लेकिन कहां तक जाती है, कितने रन यहां पर मिलते हैं। हालांकि प्रयास तो वहां पर जरूर किया था, लेकिन पहला छक्का आता हुआ फ्री हिट का यहां पर कमाल का इस्तेमाल। 5 फ्री हिट और उसमें से ये पहला चंद्रेश देसाई। पहली गेंद पर आया छक्का जरूर, लेकिन आने वाली गेंदों में यहां पर बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी, डॉट डिलीवरी यहां पर निकालनी होगी, क्योंकि
जब जब पहली गेंद पर चौका या छक्का लगता है तो जरूर प्रेशर जो है बनता है बॉलर पर, लेकिन ये पहला फ्री हिट बढ़िया इसी फ्री हिट का इस्तेमाल छक्के के साथ पहला फ्री हिट जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। इस बार बढ़िया यहाँ पर, और ये एक स्टनिंग कैच किया, एक कमाल की कैच, डिसीजन यहाँ पर पेंडिंग अभी भी। तो ये क्या यहाँ पर बैट्समैन से मालूम है कि क्या हुआ, किस तरह से क्या कमाल की ये स्टनिंग कैच, बढ़िया टच में बढ़िया यहाँ पर संपर्क हुआ था, पहली गेंद पर छक्का लगा लेते, लेकिन ये कमाल की बॉलिंग और कितनी यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, लगभग ये गेंद डीप हो रही थी, जमीन को यहाँ पर टच करने में कुछ है इंचों के ऊपर ये कैच वहां पर पकड़ी, डाइविंग अपर, बहुत ही बढ़िया एफर्ट यहाँ पर चंद्रेश, अहम मुकाबला और इस अहम मुकाबले में बढ़िया कार्य करते हुए अपने टीम के लिए पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ। शुभम नाइक का एक छक्का जरूर लगाया पिछली गेंद पर, लेकिन इस बार डिफेंस करने की कोशिश वहां पर, और लाजवाब कैच, क्या ये कैच, क्या ये यहाँ पर फील्डिंग, क्या ये एफर्ट, चंद्रेश पूरी 100% देते हुए अपने टीम के लिए, और इसी के साथ ये विकेट अपने नाम यहाँ पर की है चंद्रेश देसाई, कमाल जिस तरह ये फील्डिंग, इंटरनेशनल लेवल की ये फील्डिंग, और उसी के साथ पहला झटका यहाँ पर लगा 17 के स्कोर पर। इस बार कमाल की गेंद, यॉर्कर गेंद, और बहुत ही बढ़िया स्वागत यहां करते हुए योगेश, नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर, और विकेट मिलने के बाद कॉन्फिडेंस यहां पर बढ़ता है, तो तारीफ करनी होगी चंद्रेश, पहले गेंद पर लगा छक्का, उसके बाद एक बढ़िया गेंद और उतनी अच्छी यहां पर डाइविंग एफर्ट, वो विकेट अपने नाम यहां पर खींच लाए चंद्रेश, उसके बाद ये कमाल की डिलीवरी योगेश का स्वागत करने के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद, लेकिन रक्षात्मक तरीके से खेला, तो जिस कॉन्फिडेंस, जिस अंदाज से यहां पर बॉलिंग हो रही है चंद्रेश देसाई, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर एज जरूर लगी थी, लेकिन स्लिप जरूर तैनात, लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी वहां पर सोमेश प्रभु देसाई, फील्ड स्लिप के पोजीशन पर थे, बढ़िया यहाँ पर फील्ड सीट के गई है, और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि स्लिप वहां पर तैनात, और एक विकेट अपने नाम करने की यहाँ पर कोशिश जरूर हो रही है। और उसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति, 6 रन आए इस ओवर में, और एक बड़ा विकेट अपने नाम यहां पर किया, और इसी के साथ 2 ओवरों का खेल यहां पर होता हुआ समाप्त, 17 लग चुके बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। संजय नायक का एक होनहार टैलेंटेड ऑलराउंडर, और पिछली मैच में बहुत ही बढ़िया योगदान रहा था बल्ले और गेंद के साथ, और यहाँ पर तीसरी ओवर में ही कप्तान यहाँ पर लाया था, और दीपराज के ओवर यहाँ पर रखना चाहते हैं, जब गोल्डन ओवर या पावर प्ले होगा तब यहाँ पर कप्तान जो है उसके ओवर रखना चाहते हैं, उसी के बदौलत संजू को यहाँ बुलाया गया है तीसरी ओवर के लिए।
ओ क्या कमाल की गेंद, पड़कर उछली जरूर लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप से दूर गई गेंद और इसी की बदौलत यहां पर वाइड के साथ शुरुआत, अतिरिक्त रनों में इजाफा यहां पर होता हुआ और इसी के साथ 18 पर पहुंच चुका है स्कोर। हेलो टेस्टिंग। इस बार बहुत ही बढ़िया यहां पर संपर्क और उतनी अच्छी दिशा, लेकिन पीछे डिप का खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, विकी वहां पर बाउंड्री को रोकने की कोशिश और इसको उस चीज में कामयाब। इसी बीच 2 रन दौड़कर जरूर कंप्लीट किए लेकिन कमाल की है यहां पर फील्डिंग। इस बार पड़कर थोड़ी सी नीचे रही और डॉट गेंद यहां पर, तो पहली गेंद देखी थी कि पड़कर उछली थी, इस बार थोड़ी सी नीचे ये गेंद, तो दोहरा उछाल इस पिच में अब तक देखने को मिला है। तो संभल कर यहां पर खेलना होगा बल्लेबाजों को, आंखें जमानी होगी, उसके बाद बड़े शॉट लगा सकते हैं, लेकिन बढ़िया कमाल की ओ हवा में गेंद, वहां पर फील्डर तैनात और सीधी जाती हुई गोदी में दूसरा झटका लगता हुआ इस मैच में संजय नायक को बुलाया गया था बॉलिंग के लिए और पहली ओवर में सफलता नाम करते हुए उसके साथ ये जो कप्तान ने विश्वास दिखाया था उस विश्वास पर खड़े उतर के दूसरा विकेट का पतन यहां पर होते हुए निनाद पावस्कर 2 चौके जरूर लगाए थे, 8 रन कुल बनाए, लेकिन इस अहम निर्णायक मुकाबले में यहां पर ज्यादा कुछ खास कर नहीं सके और शिकार बने संजय नायक के दूसरी सफलता मिलती हुई। उसी के साथ 20 रन बन चुके हैं और 2 महत्वपूर्ण ओपनर बल्लेबाज दोनों के वापस भेजने में यहां पर कामयाबी मिली है। तो पिछली ओवर रही थी चंद्रेश की, वहां पर पहली गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद जो लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, एक विकेट शुभम नाइक की उस ओवर में अपने नाम की। इसके बाद कप्तान ने संजय नाइक को यहां पर बुलाया था बॉलिंग मां के लिए और संजय नाइक की इस पहली ओवर में अपने नाम एक सफलता करते हुए, तो बहुत ही बढ़िया ये कमाल की गेंदबाजी और कप्तान की भी तारीफ करनी होगी कि अपने गेंदबाजों को यहां पर किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या स्ट्रेंथ है अपनी यहां पर, उसे कोशिश में यहां पर कप्तान और कामयाबी मिलती हुई 2 महत्वपूर्ण विकेट अब तक वापस भेजने में कामयाब, दोनों ही ओपनर वापस। और उसके बाद शैलेश मिस्किन नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। इस जोड़ी पर काफी कुछ निर्भर होगा क्योंकि 2 विकेट तीसरे ओवर प्रगति पर और 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। ओ इस बार फिर एक बार देखिए एफर्ट, देखिए वहां पर डाइविंग एफर्ट, सोमेश स्लिप के पोजीशन पर वहां पर फील्डर तैनात किया था और लगभग दूसरी सफलता हाथ में आने वाली थी संजय के, लेकिन थोड़ी सी दूर रही सोमेश का यहां पर 100% डाइविंग एफर्ट जरूर रहा, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी, जब विकेट कॉलम में विकेट जब आती है, एक विकेट मिलती है, तो यहां पर बल्ले गेंदबाज का कॉन्फिडेंस अपने आप ही ऊपर उठता है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए संजय नाइक। ओ फिर एक बार क्या कमाल की गेंद, ऑफ स्टंप से दूर रखने की कोशिश, स्लिप वहां पर तैनात और उसी लाइन और लेन के साथ अपने फील्ड के हिसाब से यहां पर गेंदबाजी करते हुए संजय नाइक। फिर एक बार इस बार पंच बैकफुट पर जाकर टिप में खिलाड़ी मौजूद और एक रन यहां पर जुड़ता हुआ, तो यहां इसी के साथ ये सफल ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों का खेल हुआ है समाप्त, 22 लग चुके बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। 2 ओवर
दूसरी और तीसरी ओवर यहाँ पर दोनों ही ओवर में एक एक सफलता और उसी की बदौलत 3 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद 2 बड़े विकेट दोनों ही ओपनर बल्लेबाज यहाँ पर वापस गए और ये दबाव यहाँ पर साफ झलकता हुआ जीनो ड्रैगन्स के चेहरे पर। और जो 2 बल्लेबाज वहां पर तैनात है बीच में, सारा कुछ निर्भर एक पार्टनरशिप की यहाँ पर सख्त जरूरत। अगर और एक विकेट का पतन होता है तो और बैकफुट पर चली जाएगी जीनो ड्रैगन्स। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर चंद्रेश देसाई को बुलाया गया है। पहली ओवर में एक सफलता अपने नाम कर चुके हैं और कप्तान को और एक विकेट की यहाँ पर तलाश। बढ़िया, ये यहाँ पर टाइमिंग उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी एक रन यहाँ पर मिलेगा। खेलना कहीं और चाहते थे। बहुत ही बढ़िया सटीक का निशाना। अब जो विकेट वहां पर मिले हैं उसके बाद फील्डरों में उत्साह काफी यहाँ पर बढ़ता हुआ और बढ़िया साथ देते हुए यहाँ पर गेंदबाजों का। इस बार थोड़ी सी बढ़कर नीचे रही। पहली ओवर पहली गेंद पर फ्रीड पर छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद जो लाइन और लेंथ पकड़ी चंद्रेश देसाई, कमाल की एक विकेट अपने नाम। जब जब बढ़िया गेंदे बड़ी। अजीत फ्रीट। और थोड़ा सा दबाव यहाँ पर हटाने की कोशिश। दूसरा फ्री हिट लिया गया है बल्लेबाज द्वारा। इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड। और अगर थोड़ा सा थ्रो और सटीक होता तो यहां पर मौका बन सकता था, लेकिन जो एक मौका मिला था थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, उसी का फायदा उठाकर दूसरा रन भी यहां पर चुरा लिया। और बढ़िया यहां पर तालमेल और 2 रन जुड़ते हुए टोटल में। तो पहला फ्री हिट वहां पर 6 रन जरूर आए थे, लेकिन इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी 2 रन यहां पर जुड़ता है टोटल में। शैलेश मिस्किन और योगेश दोनों की जोड़ी यहां पर मैदान पर और कुछ हद तक अब तक पारी को संभालने की कोशिश, एक पार्टनरशिप बनाने की यहां पर कोशिश दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। इस बार बढ़िया और शॉर्ट कवर का खिलाड़ी वहां पर मौजूद था। रन की आशंका को किया समाप्त और एक डॉट गेंद यहां पर आती हुई चंद्रेश देसाई। और इस बार वहां पर तीर की तरह जाती हुई गेंद, शॉट तो कमाल का, डाइविंग एफर्ट वहां पर। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला और अपने फॉलो थ्रू में यहां पर डॉट गेंद। उसी के साथ ये 4 ओवरों का खेल यहां पर होता हुआ समाप्त। 26 लग चुके बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। और 4 ओवरों का खेल यहां पर हुआ समाप्त। 26 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। एक बढ़िया शुरुआत यहां पर कुरचोरेम वॉरियर्स के लिए। और इसी के साथ कमेंट्री में यहां पर बदलाव आगे का हाल सुनाने के लिए आपके सामने होंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर सागर गोसावी। अंग्रेजी में आपके साथ जुड़ेंगे और आगे का हाल सुनेंगे अंग्रेजी में।
Thank you, Sanket. So now Sanjay Naik into the attack to be bowling the 5th over from railway station, and so far successful, has got a wicket. Bowling the 2nd. So Shailesh Miskin is a man on the strike. So let's see how this over is about to progress. Sanjay Naik to Shailesh. Meanwhile, a lovely delivery, slightly deviating away from the batter. As we can see, a hint of a swing, the way Shailesh Miskin is playing. So definitely, this is a wonderful start by Curchorem Warriors. Manages to take 2 wickets in the initial half. One, a beautiful catch taken by Chandresh Desai onto his follow through, diving forward. And the second was taken by Sanjay Naik. Meanwhile, way outside the off stump. Wide is the signal from the umpire. Sanjay Naik inviting Shailesh Miskin to really go after him. So let's see how the approach is going from here on. So far, Curchorem Warriors are able to put a halt on the high scoring rate of Geno Dragons. Again on to the back foot. There's a chance of a catch. Chandresh Desai could not held on as the ball falls short of him, but a wonderful effort from him. A single to get off the strike. And that brings Yogesh Kautankar at the strikers end. As they fall off the wickets, definitely have put some brakes on the batters at the moment. They are taking their time, not taking any risk. So let's see whether what is going to be approach of meanwhile, a full up his delivery, equally well played, drives the ball straight down the ground. Sunil Sawan, the tallest guy, fields the ball quite comfortably. In the bargain, just a single. That takes the team total to 29. This is what actually happens when there's an early fall of wickets. As batters are in a double mind whether to go after the bowling or to be a little cautious. Meanwhile, Shailesh is not going to be quiet. Another connection into the mid wicket, not getting the proper willow of the bat, not getting the proper spot. And a ball goes very slowly towards the fielder. So good competition is happening out in the middle. Good battle is happening out in the middle between Shailesh and Sanju. Meanwhile, Yogesh is very cautious. Again wanted to grab the ball. And ball takes the inner half of the bat. Goes towards the square leg region. Another single. So lovely bowling continues from Curchorem Warriors players. So now it is going to be a good battle. Sanjay to Shailesh. Shailesh is not going to be quiet for a very, very long time. This is a T20 format, and he is known for those big hits. Not able to connect properly. Meanwhile, there is a different strategy by the captain for his bowler. Let's see whether this is going to be another good connection towards the mid wicket. Rajat could not stop the ball. Ball goes straight towards the wideish long on region for a single. So that concludes over number 5. So after completion of 5, score is 32 for the loss of 2 wickets. So lot many things to be taught in this tournament, as many new things have been added apart from the normal T20. So now Chandresh Desai to continue. So far a decent line and length bowled by Chandresh Desai. And definitely the challenge will be on as Shailesh is at the striker's end. So definitely Shailesh is not going to be waiting customer for a long time. Definitely he is going to find some way, as he has been promoted for that. And now Chandresh Desai has to think how to deliver. He's very confident. So far a decent overs bowled by Chandresh Desai in this edition so far.
still have bowled 2 beautiful overs in the finals as well. So now bowling the third over of his quota, and a dangerous looking Shailesh Miskin is at the striker's end. Hello, check. Again, plays watchfully to recover, chance of run out at the non-strikers, and Somesh held on as there would have been a chance of more runs. So good thinking by Somesh Prabhudesai. Even Yogesh Kautankar turns and comes back quickly. So first delivery goes as a dot delivery. So good contest is about to happen. Shailesh against Chandresh. Another good delivery straight down the ground. Good strike. Ball goes away from the field, and that is a wonderful strike to get that It's a boundary boundary. 4. Shuffling down the track, backing up his instincts, and a lovely connection to take the ball straight down the ground for a boundary. So with that, team total moves to 36. So now the intentions are quite clear, as I'm not going to wait for long. This is the 6th over in progress. Definitely they need some runs at the board, and in that attempt gets a boundary. Another good delivery. This time a good comeback from Chandresh Desai, not a bowling fuller. Shailu onto the back foot, wanted to cut the ball, no connection, makes the ball to travel safely to the keeper. So good drama is happening out in the middle in the 6th over. 2 wickets back to the pavilion, 36 on the card. Another good delivery onto the leg guard. A big sound of the thigh has been heard. The protection that has been put for the leg, and a single in form of leg buys. So that brings Yogesh at the striker's end. So definitely Chandresh now thinking how to carry on in this over. Meanwhile, ball was played slightly uppish away from the mid-wicket fielder, and a single that takes the team total to 38. So Chandra Desai in a hunt, trying different strategies to bowl against Shailu. Let's see whether he can be a little successful, or Shailesh plays it down the ground. Beautiful strike along the carpet towards the long off region. Plays watchfully. Takes a single, retains the strike in the 7th over. So after completion of 6, it's 39 for the loss of 2 wickets. So far, good partnership is happening out in the middle. 2 wickets are back to the pavilion. Shailesh and Yogesh are out in the middle, trying to build up partnership, trying to gain the momentum that is required for Geno Dragons. And they are up against a good team from Curchorem area. As the local team is playing in Hello Jersey, and they are fielding first. So supporters will be coming out in large numbers as the day progresses. As Curchorem is a place where cricket lovers, they love to enjoy the beautiful match of cricket. It may be the local side or the team from other part of the ground, but they support the better players. And definitely huge number of spectators will be out as the day progresses. So meanwhile, we are into the 7th over. Sanil Sawant, the in charge from railway station, and Shailesh Miskin at the striker's end. Again, was a little wide. Shailesh in a hunt of getting that boundary, tries to cut the ball. Ball takes in the lower part of the bat, travels towards the keeper. So first delivery goes as a .1. Shailesh Miskin trying to take each and every possible chance to score the runs. So far not able to connect it properly. Sanil Sawant
about to bowl the second delivery. Meanwhile, a free hit is the call from Shailu Miskin. So that will definitely make to shift some field placements on the ground. So now Sanil Sawant has meanwhile, there's a better connection shifting onto the back foot, going towards the off stump and guiding the ball towards the fine leg region into the vacant zone to get that boundary. So that takes the team total to 43. So 3 free hits have been taken so far by Geno Dragons. Shailesh Miskin trying to find those vacant areas. So let's say so far a boundary in this over, that too on a free hit from the allotted quota. Still a beautiful over, we can say, by Sanil. Another good delivery onto the leg. There's a big appeal. But the signal from the umpire that ball may be going down the leg. So a good comeback from Sanil Sawant, hitting the right zone, hitting the right area to keep the bat of Shailesh little quiet at the moment. Again, a good delivery, short of land. The Shailu again is shuffling outside the off stump. Ball goes immensely towards the wicket keeper, well collected behind the stumps by none other than the captain of the side, Vikas Desai, keeping the stumps. And some different strategy now. So definitely Shailu Miskin is playing with the minds of the captain and the bowler. So let's say what is going to be the strategy from here on as the fine leg fielder drops back to the boundary rope. Sanil Sawant, very shrewd bowler. A moderate run-up from railway station and about to deliver Shailesh at the striker's end. Another good delivery. Straight onto the belly. There was a appeal, but the height is the concern. And another dot ball in the bargain. So good over so far. Team total is 43. Just a boundary from this over. Beautiful over, although that was from the free hit. So good bowling continues. Sanil really have to hit into the right areas to keep this good team quiet at the moment. And that will be the thought of the captain. So meanwhile, Shailu Miskin is at the striker's end, struggling to collect the ball at the moment. So let's see what is going to happen now on this incoming delivery. Another good delivery, cuts the ball towards the covers fielder. Not getting it towards the much finer. Over up. And a single to end the over number 7. So after completion of 7, it's a 44. Going almost at the run rate of 6 plus at the moment. So after 7, it's 44 for the loss of 2 wickets. So now Somesh Prabhudesai have been introduced from the Martigad end. And he was the man of the match in the semi-finals, batted well, even bowled. While bowling, he has taken 2 wickets and 43 with the bat. So now Somesh has been brought from the Martigad, and this is going to be an even contest. Somesh is also a good youngster, good prospect to be included in the team, playing as outstation player. Shailesh Miskin having immense experience under his belly. So this is going to be a very good contest, as we have seen Shailu slightly struggling to connect. But now it's time for him to swing the bat as hard as possible. So let's see whether this over is going to be in the favor of the bowling side or the fielding team or the batting team. Somesh, right arm over the stumps. Captain behind the stumps, and Shailu at the striker's end. So here we go with the 8th over.
First delivery, Yorker, equally well played. Look at that effort. Ball was almost hitting the wicket, and Shailu brings the bat at the very last moment. And meanwhile, looks to be the willow has been disturbed by Somesh. A quick delivery right into the block hole, a Yorker. And Shailu Miskin gets away with that Yorker. The second willow to be changed. A new willow has been brought for Shailesh Miskin. So this is a better start by Somesh. So let's see what is going to happen on the second delivery. In the first delivery, full marks for Somesh. A great Yorker. Another good delivery. Look at the pace by which Somesh is bowling at the moment. Not giving any room, not giving any flight, not giving any invitation for the batter. Another good delivery, and the bails goes off. Somesh Prabhudesai, the man in charge, takes the third wicket for this side. Shailesh Miskin back to the pavilion. What a player that have been included by Curchorem Warriors at the moment. So far, no runs from this over, and a priceless wicket of Shailesh Miskin, who has been consistent throughout the tournament. Third wicket back to the pavilion at the score of 44 into the 8th over. So definitely now the captain will be thinking what strategy to plan from here on. As 3 wickets are back to the pavilion, they have lost the man who accelerated in the previous half of the tournament. And now this is a big occasion. Let's see who is going to be the incoming batter. But Geno Dragons are having a very deep batting lineup. So definitely lot of things to be considered. Lot many thoughts will be in the mind of the captain as whom to promote. And now here comes a left-handed elegant batter, Rahul Kenny. Definitely he is sent up the order to steady the innings at the moment. They require a partnership. And a lot depends on this pair as how the future of the inning is going to depend. So Rahul Kenny out in the middle and will be at the striker's end. So here's opportunity for Somesh. So let's see how the strategy is going to happen from here on. Rahul Kenny having a keen look at the wicket at the surface as trying to understand how the surface is at the moment. It is a beautiful afternoon. It's hot and humid. Even a breeze is strong breeze is there on the ground. Perfect playing condition for this beautiful game of cricket. Taking the guard from the main umpire, Nilesh Naik giving his services on the day of the finals along with senior partner Ajit Shirodkar, who is at the square leg region doing the role of square leg umpire. Somesh Prabhudesai from Matigada and Rahul Kenny at the striker's end. Again plays watchful. Somesh after the delivery stops the ball quite comfortably. Meanwhile, a comfortable single to open the account for Rahul Kenny. So that brings Yogesh at the striker's end. Yogesh is also a very good prospect. Have played for under 25 state team. So huge role for Yogesh as well at the moment. And definitely they will be looking to get a partnership. Let's see how the things are about to happen in this over. Another good delivery, well played straight down the ground. Fielder from the cow corner reaches up to the ball. Meanwhile, a single. So far, a decent over by Somesh. Just 2 runs from it and a wicket as well. So beautiful bowling continues from the semi-finals by Somesh. Cuts the ball, cuts it fine. Tushar Sawant after the ball. Can he stop it? Not able to stop. A beautiful cut shot to get that boundary. And after the completion of
8 overs, exactly half century for Geno Dragons. 50 for the loss of 3 wickets. So now a short meeting happening out in the middle, but finally it's a Sunil Sawan to bowl the 9th over. So far this good bowling displayed by the bowlers of Curchorem Warriors at the moment have managed to keep Geno Dragons at the score of 50 at the end of 8 overs. So Sunil to deliver from the railway station end. Yogesh at the striker's end looks to be set at the moment. And definitely there will be a message from the captain as how to carry on from here on. Good delivery, plays a straight down the ground. A wonderful straight drive to get a single. And that single will bring Rahul Kenny at the striker's end. The person who is behind the stumps at the moment have played a lot of cricket on the Goan soil as well as out of Goa. Knows each and every player and their strength and weaknesses. So definitely working the strategies as per what he knows. So let's see how this over is about to progress. Sunil Sawan to deliver. Rahul Kenny. Meanwhile, a beautiful delivery. Straight on the money. Getting some punches out of the wicket. Delivering into the right zone. Makes the batter to play with the straight bat towards the cows. So it's a wonderful strategy, wonderful bowling. Sunil Sawant concentrating as hard as possible and trying to hit in those decent areas to keep the batters quiet at the moment. Meanwhile, slightly down the leg stump. Missed everything on its way. Well collected by Vikas Desai, the captain of the side. Meanwhile, wide is the signal from the umpire, and that takes the team total to 52. Another good delivery, cuts the ball. Somesh manages to stop the ball right inside the 30-yard circle. Meanwhile, a single that brings Yogesh at the striker's end. Another good delivery, well played, a straight drive towards the long region. Deepraj Gaonkar, the Australian player. The Flying Gaonkar, that's the name that has been given for him. And even one more name is Khiladi. So far, a decent over in progress. 9th over in progress. 54 for the loss of 3 wickets. Meanwhile, a beautiful flick of a wrist and the ball disappears out of the boundary rope. You can't bowl onto the legs of Rahul Kenny. That is his strongest zone. That is his strong area. Definitely the captain have to give a thought to his bowler. This is
eyes on cherry on the cake for Rahul Kenny. He must be very happy to see that delivery onto the legs, immensely onto the back foot. Good wrist work. Connects the ball from the middle of the bat and guides it over the square leg region for a big six, and that takes the team total to 60. So now, finally, some acceleration that have been seen by Rahul Kenny. Times the ball to perfection. Sanil Sawant thinking now where to deliver. Another away going delivery, way outside the off stump, wide is the signal. Meanwhile, a full pitch delivery. This is the right areas to be delivered. You have to make the batsman work. That must be the thought from the captain. And that concludes over number 9. So after completion of 9, it's 62 for the loss of 3 wickets. And with this, it's a time for me to take a break. And inviting the senior most commentator with his wonderful comments, Harish Kakodkar, to join in the commentary box with the further updates. Changing bowling. Right now, round to you. So the end of 9 overs. It is 62 for the loss of 3 wickets. 1 wicket taken by Somesh in just the 1 over. And here he has been changed immediately after bowling that 1 over. And they have got Tushar Sawant. Tushar Sawant surprisingly did not bowl in the semi-finals. That was a big question mark for me. Why? Maybe the question can answer be by the captain. Now is an opportunity here for Tushar Sawant in the finals. A wonderful off spinner, and especially bowls well to the left-hander as well. So Rahul Kenny will be on strike. In comes Tushar. Very nicely tossed up delivery, and both these spinners, one is a quick leg spinner, Somesh, and this off spinner, both are different in their own regards. Somesh is the one who bowls flat, quick, and might be slight variations here and there, but Tushar will flight the ball, ask the batsman to come and drive me. You can see that beautiful start here. He's bowling in the perfect trajectory and in the perfect area. So if at all batsmen have to go for the shots, batsmen have to take the risk and go after him. A nicely cut away down towards the deep square leg region. The fielder goes towards the ball. Nicely fielded here by Bablu, and it has been thrown quickly. So that's the reason why I guess good fielder should be the boundary riders. Quick hands, good throws, good arms, good shoulders. And Bablu is one of those. Side change. Right now, move to you. So huge response here. Lots of crowd, slowly and steadily. Definitely in Curchorem you can see that crowd, and they love this game, especially leather ball. It's a different ball game altogether. This time in the air, nicely played on the leg side, and just going to be single. So good fielding down the boundary line. So same fielder, Bablu, fielding first one to the left hander in the extra cover. Now to the mid-wicket region for the right hander.
The field rotates here for the left and right hander, taking little bit of time out in the middle. Umpire Nilesh Naik and Ajit Shirodkar officiating these finals. This is, oh, the ball came slow. You can see that he wanted to play off the back foot, trying to play that cut shot. The ball came way too slow in the air, tossing up, flighting into the eyelid of the batsman, and asking the questions here. When you bowl slow in the air, sometimes the ball also rips off the surface and maybe comes a little slow. Maybe hurries, depends upon where the ball has been landed or where the spots are for the off spinner. Once again, very nicely bowled here. Very nice over. Wonderful start here by Tushar Sawant. Very steady and very good start, you can say, from the off-spinner of Curchorem Warriors. At the end of the halfway mark of the first innings is 65 for 3. So Sagar Gosavi quickly with his shoes on to give a little bit of energy and fluid to all these players. He is going to be the super sub. Well, we'll see whom he replaces during the run chase. His services will definitely be required in these finals, especially in the run chase at a time maybe in 5, 6, 7 overs. And here comes a change here from the batting side. You understand that this is going to be the shorter end. They've got Somesh Prabhu Desai to bowl from the shorter end, but immediately it has been changed and given to Deepraj. So golden over has been taken in the 11th over. As for the viewers who have just joined us and don't know about the Sanguem cricketers, the new viewers who are watching us live on Goa Livecast, this golden over is to be taken before the end of 12 overs. Maybe 11th, 12th. 12th is the last over that you can get it, or you can take it. And now it has been taken in the 11th over just because this is the shorter side of the ground. These are the shorter boundaries here from the railway gate end. Oh, that's an outside edge. It's a genuine outside edge from the bowler. We have seen how well Deepraj bowled. Is an important, I think, player in this side. As an Australian player, played in Goa Ranji team, represented one of the quickest fielders. Gives it wholehearted for any of the teams. And one thing for sure, wherever Deepraj is there, the trophy follows him in Sanguem Cricketers editions. He played for, you can say, not very strong side like Agonda Warriors. They were crowned as the winner. This man single-handedly won that championship with some stunning catches. This time right down the ground for a single. Not only in batting and bowling, but he had taken 3 stunning catches in the finals where for a normal player looked impossible to take those. But he had taken and changed the complexion and the scenario of that finals. I call him the flying Gaukar. Maybe so far he has not got him the opportunity. This is the 11th over in progress, and since this is the golden over, we'll tell the score after the end of this over, as it is going to be multiplied by 2.
This time nicely cut away. Well, wonderful statistics here. That was the semi-finals, and Dipraj was playing against the same Curchorem municipality team in the semi-finals, and those two stunning catches were one of Sanjay Naik and one of Sunil Sawant. And now he's playing in their team. So the role is same. The team have been changed. It's a different team now that he's playing for, and still he's in the finals. So Yogesh Kautankar is playing on 10. Well, took some time, played 17 balls. Rahul Kenny is playing on 17 of 12. So he's much more aggressor compared to Yogesh Kautankar. Maybe that is the role given by the team management here. Oh, lovely ball, Yorker length delivery. This has been a lovely over here. Good over, steady over, no room whatsoever. Not easy to hit those Yorker length deliveries. He does it twice in this over so far. So can see little bit of pressure cribbling on to the batting unit. Maybe they need a momentum. Little steady here, too steady I guess. That's a shot of intent. Is it a catch? No, he didn't go for the appeal, but that's a good fielding. Acrobatic stuff here from the flying Gaonkar. That's exactly why I said fielding is now the most important aspect of any side. If you want to do well for yourself in any of the tournaments that you do, whether it's tennis ball, leather ball, T20, or even the Ranji levels, fielding has to be of the top standard. Once again, straight to the man at short cover. Chandresh Desai fields over there. And lovely over here. They tried to go after him, but he did not give an inch away from the effort and also the commitment. So good golden over here for Curchorem Warriors. Just 4 runs coming off this over. Well, multiplied by 2, it is 8. So at the end of 11, the score is 7-3, 73 for 3. So most of the local supporters supporting here Curchorem Warriors, but cricket supporters are supporting a good match. They want a wonderful finals, which goes right down the last ball of the second innings. A thrilling contest. And so far it is turning out to be one. Although Geno Dragons looking as a strong side on paper, but here no short of commitment and brains being used to the utmost percentage by the captain of the bowling unit, Curchorem Warriors, and the team. Doing a fine job at the moment. Once again coming down the ground and played it straight. First maybe he thought that I might go for the cross bat, then he thought the ball was not pitched right up, so I had to go down the ground with a straighter bat. Well, you can see a little itching here, to get the boundaries, but it's not happening at the moment. No loose holes, no loose deliveries. Keeping it tight. This match, this finals is on a knife edge at the moment. Oh, this beautiful bowling. I told you Tushar Sawant is bowling well and is flighting the ball. Maybe Rahul Kenny thinks he has got the back into the popping crease. Definitely a wide ball. This is one of the smartest wicket that Tushar Sawant must have taken. You saw the batsman coming in front down the track and bowled it wide. And the keeper, Vikas Desai, was ready and just quickly flashes the stumps out of the crease. So third umpire signal has been given. So let's wait and watch. काय तसं मध्ये राहता का उद्या पडलेला रे. So I think it is not that difficult decision here for the third umpire, and the signal is red one, and it's going to be the wicket here. So quick stumping from Vikas Desai, getting his team the 4th wicket, and the ploy of using Tushar Sawant has definitely worked.
So Rahul Kenya was going after the shots in trying to get the boundaries as Yogesh Kautankar was struggling at the other end to get the boundaries, and that made his partner promptly go towards the aggressive mode against Tushar Sawant, and that ball was deceived. All ends up to the left hander. 75 for 4 in the 12th over. So pretty steady at the moment. This match is balanced, evenly poised, you can say, as the bowling unit of Geno Dragons is quite strong. So somewhere around 150 plus is not going to be easy to chase in the finals. Well, the slow motion and the use of the slow motion technology and the two cameras. Going for the big one, slog sweep, might be in the air and just about the head of Bablu. Well, enough power to go over the fence for 6 runs. A magnificent hit just of the very first ball that faced Shubham Chari. It is nicely flighted and right in the slot. But you need to be gutsy. You need to be gutsy to going after that shot the very first up. Otherwise, if you didn't time it well, there was a deep cow corner region, and you might have ended up giving catch straight in the hands. So I can call him gutsy Shubham at the moment. Oh, yes, plumb in front, hitting the back leg. Hitting the back leg. That was nothing short here from Shubham Chari. First come in front and then waiting for the ball to tap for a single down at the backward square leg region maybe, and he has been trapped just in front of the wickets. 2 wickets in this over, which is changing the scenario of these finals for Curchorem Warriors. What a finals we're witnessing. There is drama, there is something or the other unfolding almost every over. Shaggy. So now it's time for the new man to come onto the wicket. Yogesh Kautankar is still there. 81 for the loss of 5 in 12th over. And not looking good here for Geno Dragons. They still got batting left. Plenty of batting left in Geno Dragons. Bat deep down. Slightly. Yeah, covering. Bowling right arm round you. They've still got batting left. Is Sahil Duri, the captain of the side. Wonderful all-rounder for Goa and team in the past. And Harshad Gadekar as well, who has changed the scenario in the semi-finals with his blitzkrieg innings. Went after the bowling, went berserk in the semi-finals, and that's where they got a big total. So you cannot say that although 5 wickets has been taken by Curchorem Warriors, they can take it easily, lightly this match. It's the finals. This is T20. Just 1 over and the scenario can change. How well he has bowled. How well he has bowled, Tushar Sawant. So 3 free hits have been taken. 2 are still remaining in the kitty. Lovely piece of bowling. Lovely piece of bowling. He knows that the batsmen are under pressure, and here is a youngster who has shined brightly in the circles. Vardhan Miskin. So once again, he is hitting the right channels. He is hitting the right chord today in the finals. Well, this over has suddenly lifted the spirit of Curchorem Warriors camp. You can see there is a little buzz around in this camp. They feel that yes, we can do it, and we can do it very well. So Tushar Sawant bowling 2 overs and getting 2 wickets for just 11 runs. And at the end of 12, it's 81 for 5.
Spinners at both the ends. It's nicely played in the backward of point region. Sandeep Kodikar fielding there, just giving a single. Somesh Prabhu Desai. Both the spinners are economical, and I think Curchorem Warriors must be wary of the fact. They should be wary of the fact that Geno Dragons also have two good spinners in their ranks. That's the reason I say this is going to be a close battle. Nicely played. This youngster is doing very good when he represented Goa in the under 19 category. And upcoming star, upcoming talent, plays nicely, plays with a positive mindset, and plays with a straight bat. Just that this is something else. This is like a great finals between two wonderful sides. And he has been given a role at a time when main batsmen are back in the pavilion, and he has to do the role of maybe the pivot here, just trying to rotate the strike. When his time comes, he's going to go after those big shots. Certainly, as a youngster, he will buy his time. Oh, what a kind of delivery was that. I don't think so even Kakoda Express, Sanil Sawant would have bowled that quicker. This is express pace. I still remember many a times in when I was watching Anil Kumble bowling, whenever he was hit for 6 runs, this was the next delivery from Anil Kumble. This time nicely played. Chandresh Desai was fielding in the short covers region. Chandresh Desai wants to go after the ground as 10 overs have completed, but he has done such a wonderful fielding today. His other players are not allowing to do so. They want him to be inside. This might getting the boundary here. This is nice shot, using the pace of the bowler and trying to be cheeky here. 4 runs nevertheless. So the youngster is using his brains well, understanding the bowler has got a lot of pace. If you can use that space to my advantage, I can get few runs for my side. With this boundary, the score moves on to 88 for the loss of 5 wickets, 13th over in progress. Oh, what a answer here. What a follow-up delivery from the bowler. Somesh Prabhu Desai. Dot ball beaten all ends up the left hander. And a dot ball will finish over number 13. The score is 88 for 5. Tushar Sawant continuing, and rightly so. This is a bad ball here from Tushar Sawant. A very bad delivery. A rank hop here from Tushar Sawant. Way too short, and how classy he has played it. Standing tall onto the back foot and rising up just like the ball risen from the good length area and played it inside out over the covers region. A wide long off region for a good boundary.
This is once again coming down the ground. A little chip, you can say. It was not a full-blooded drive from the batsman. It was little chip trying to have a little shimmy down the ground and playing with a straight bat. So Yogesh Kautankar has spent a lot of time here out in the middle. And by this time, his team and he will also think, I need to get a move on. This time nicely played away on the leg side in the deep. And it's just going to be single. So good over so far. Very good over. 7 runs coming off the first 3 balls. And Yogesh Kautankar getting all those 7. Well, not only Curchorem lovers, but I see many popular faces from Sanguem as well watching these finals of Sanguem Cricketers 22nd edition finals. So once again, just hitting it back. Now you can see there is a buzz from the dressing room. They want a single of almost every ball. Need to get towards that 150 mark. Once again, nicely driven, very nicely fielded here. Very nice piece of fielding, piling up the pressure on the youngster. Not allowing to rotate the strike, and that will also pile up the pressure at the non-striker's end. So good pressure being built up here by the captain, Vikas Desai, and his army of 11 fielders. Once again now, maybe they are thinking, let's give a single of the last ball to Vardhan Misking and keep him on strike the next over. And that's a lovely finish. He started off badly with a short ball, but in the end he finishes off well, Tushi. And just 7 runs coming off that. At the end of 14, it is 95 for 5. विकी 1 ओव्हर 15 मिनिटं झाले 14 ओव्हर झाले 2-13 2:27 नाही 3:27 5-10 मिनिटं सुद्धा त्या पैसा काय टेन्शन घेता These two are going to be the batting power play overs. In comes Dipraj Gaonkar bowling from the railway gate end. This time nicely hit. This is a mistake here. A mistake committed by Dipraj Gaonkar. It was a full toss ball and Yogesh Kautankar points is straight down the ground. So missing his trajectory and the batsman coming down the ground with a lovely punch, you can say. Just half jab, short arm jab from the batsman, getting him a boundary. It's always a good factor when you get a boundary with the very first ball. This time nicely played in the backward of point region. There is a chance of a run out. Direct hit. Oh, this could have been curtains. Unlucky. Good effort nevertheless from Somesh Prabhudesai to throw at the non-strikers end. Yogesh thought maybe there was not a chance of a single. Vardhan was at the danger end, the strikers end.
Once again, lovely shot in the covers. Hello, good piece of fielding. Very good piece of fielding. They want to go for the second run, but you cannot blame the fielder over here. Cannot blame the fielder. While you are diving, the ball is definitely going to ricochet, go somewhere else. And the effort is definitely there. 100% committed Chandresh Desai today. And 100 Dragons. 100 up in the 15th over as well. Well, this match right now is on a cutting edge, and you can see there. Once again, driven nicely, not much timing. Once again, could not grab the ball. Just a little bumpy bounce. A little cat and mouse going on. A game of cat and mouse between the bat and the ball. Batsmen want to go for the boundaries, trying to get the boundaries and sixes, trying to up the ante here. The bowling side, bowling unit is not allowing any freebies. Although there was provided a first one, that full toss ball that fetched 4 runs to Yogesh. At a certain match, well, they very well know, this bowling unit very well knows, we cannot allow this side to get more than 160. Maybe somewhere around 150 is going to be a par score on this wicket. This is a good short ball here. Surprise with the short ball. Very nicely pulled away, and ball went for 4 runs. This is a lackluster effort here. They needed a much better effort here from the fielder in the fine leg region. Deep Raj is not happy because he knows all about the efforts given in the field. But a surprising short ball. He was not into the position. He was absolutely not into the position. But finally that evasive action, enough part of the bat to get himself towards the backward square leg, fine leg region for 4 runs. Taking the score to 106, but it doesn't matter in T20 cricket. Finally, the score sheet will say 2 boundaries coming off this over. 1 straight off the ground, 1 in the fine leg region. 1 to the right hander, 1 to the left hander. This is once again an outside edge. That is the fielder down there trying to play across and getting a leading edge, a strong leading edge at the end of 15, 107 for the loss of 5.
into the slot, but Sanjay had an extra pace onto that delivery. 4. He is the 16th over so far. Tough battle, and once again a wild swing. A big wild swing here. Is not bowling into the arc of Arshad Gadekar. He's bowling it slightly wide. Arshad Gadekar is very strong in the mid-wicket, long on that area where he scores those sixes. Sanjay is also pretty smart. You can see they are rotating the fielders, want to get the right fielders in the right position. Somesh Prabhudesa is a little taller than Munna. They want to get him at the longer boundaries. And here comes the free hit. The last of the free hits, the 5 allowed for any side batting. And here comes the last. That's the signal done by umpire Nilesh Naik, saying this is going to be the last of the free hits. Harshad Gadekar, what is the outcome that is going to be of this free hit? Can he go for the full Monty? Can he go for maybe a cheeky shot down towards the third man region, as Sanjay Naik has space? A little tap down, can if finds the gap, then can get a boundary as well. So Harshad, as far as I know, he's going to go the hard way. I told you he's going to go the hard way, and he went a long way as well. Magnificent strike from Harshad Gadekar. It was right in the slot. Harshad was waiting with his top gear, and a wonderful swing of the bat with a magnificent and timely six. How lovely that is. One knee bent, and the power that Harshad Gadekar has, he can hit sixes on any boundaries, any long boundaries. Taking the score to move 113 for the loss of 6 in the 16th over. Fields of play. So the free hits are gone out of the equation. The last free hit fetching 6. Once again driven nicely. This time not that well timed as the previous shot. Want to go for the second, and this is a longer boundary. So easy 2 runs taken by both these batsmen, scampering through for the second run. 115 for the loss of 6. Yeah, you can expect that when the batsman of Harshad Gadekar or maybe Sahil Duri, when he comes on, if at all a slight mistake here from the batsman, sixes and boundaries are going to come by. It's just that there should not be flurry of sixes and boundaries. Is once again a cracking shot, not a bad ball, shot of good length delivery, but this man is in really good touch, really good form, Harshad Gadekar. He is a top class bowler in his prime time for Goa Ranji team, and now since he has played at the highest level, he is finding this space much easier to handle. So getting a little move on, getting the momentum upbeat here after Harshad Gadekar has come onto the wicket. Just 9 of the 5 balls that he has faced at the end of 16 is 116 for the 6, and it's going to be an interesting last 4 overs. If this last 4 overs, 24 balls, which can be bowled well in an enough economical and in a manner that they can restrict this side to maybe 150, 155. We can see a wonderful finals and wonderful run chase from Curchorem Warriors. If they can allow them to drift away towards 165, 170, well, I personally feel Geno Dragons are going to go a little 1 notch up ahead during the run chase. To get the further updates of this match is definitely Hindi voice, and Sanket Gaonkar will be with the further updates. वो क्या शुरुआत है इस ओवर की दीपराज यॉर्कर लेन गेंद और 4 ओवर बाकी पहले ओवर 17वें ओवर की और अब जो 4 ओवर है उस 4 ओवर में जिनो ड्रैगन चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रन बने और एक बढ़िया टोटल यहाँ पर बने ताकि मैच एक बढ़िया मैच बने, इस फाइनल मुकाबला जो है इंटरेस्टिंग बने। इस बार बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर तैनात, 1 ही रन यहां पर मिलेगा और 117 इस 1 रन को जोड़कर वह है कुल स्कोर और
चाहेंगे कि 150 का आंकड़ा यहाँ पर छू ले, उसके करीब पहुंचे, ताकि बढ़िया यूनिट, बॉलिंग यूनिट जो है बहुत ही बढ़िया है जिनो ड्रैगन के पास है, लेकिन कुरचरेम वॉरियर्स के पास पे तगड़े बल्लेबाज मौजूद, और यहाँ पर चाहेगी जिनो ड्रैगन्स की करीब 150 145 के करीब यहाँ पर पहुंचे। इस बार आगे आए, लेकिन जिस लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, तो बहुत ही मुश्किल बड़े हिट खेलना। यहाँ पर ऐसी डॉइड गेंदे जो है, खराब गेंदे या शॉर्ट गेंदे यहाँ पर अब तक दीपराज के कंधों से अब तक देखने को नहीं मिले हैं। उसी के बदौलत इस 17वें ओवर में भी अब तक का एक भी बाउंड्री हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली है जिनो ड्रैगन्स को। इस बार बैकवर्क जाकर मिड विकेट क्षेत्र में खेलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन चूंकि क्या ये लेंथ और लाइन के साथ दीपराज एक अहम कड़ी, एक अहम गेंदबाज इस कुरचरेम क्रिकेटर्स के लिए, और अपना काम बखूबी यहाँ पर निभाते हुए और बढ़िया कार्य अब तक किया है दीपराज ने। बढ़िया इस बार संपर्क अपने फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन संजय नाइक का वहां पर फील्डर तैनात और एक रन जुड़ता हुआ टोटल में। फिर एक बार क्या ये यॉर्कर लाइन गेंद और सिंगल चुराने की कोशिश आसान यहाँ पर। बढ़िया ये ओवर, कप्तान चाहेगा कि यहाँ पर बाउंड्री आई, चौके छक्के लगे, लेकिन दीपराज की ये कमाल की ओवर। उसी के साथ 17 ओवरों का खेल यहाँ पर होता हुआ समाप्त। 120 लग चुके बोर्ड पर 6 विकेटों के नुकसान के बाद। 90 मिनिटं झाली। स्टॉपेज पळे मरे आणि विकेट्स पळे आणि कितले चालतं पळे टाइम। 12 आणि स्टॉपेज पळे कितले आहेत। का ये उसका स्पेल यहाँ पर समाप्त होते हुए, और 30 रन, हालांकि आज विकेट नहीं मिले, लेकिन जिस अनुशासन के साथ, जिस लाइन और लेन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी की, तो बल्लेबाजों के यहाँ पर रोक के रखा। उसके बाद 18 लीगल डिलीवरीज बाकी है, और सोमेश को फिर एक बार लाया गया है कप्तान ने बॉलिंग वाक के लिए। पहली गेंद, क्या गति और क्या लाइन और लेन के साथ सीधी कीपर विकास देसाई पीछे मौजूद, और बहुत ही बढ़िया कप्तानी आज जो बॉलर यहाँ पर जिस तरह से इस्तेमाल किया है, जिस तरह से सभी बॉलरों का साथ रहा, और सांगेचे चेअरपर्सन प्रीती नाईक हांगा उपस्थित असतात, आमचे पाहुणे, तर त्यांचे स्वागत ह्या टुर्नामेंटाच्या आजची फायनल स्वागत असं त्यांचे। वाइड का इशारा आता हुआ, और पिछली गेंद पर बड़ा प्रहार। योगेश अपने 36 व्यक्तिगत को स्कोर पर खेल रहे का बढ़िया पारी, बढ़िया इनिंग। फिर एक बार बढ़िया शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन पर एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। क्या दूसरा रन? जी नहीं, अगर लेते तो यहाँ पर महंगा पड़ सकता था। एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट, और योगेश एक बढ़िया पारी, 37 रन। हालांकि 36 गेंदों में 37 रन आए, लेकिन जो अगला छोर, दूसरे छोर पर लगातार अंतराल पर जो विकेट गिरते रहे, उसी के बदौलत अपने हाथ नहीं खोल सके। संभली हुई पारी, जरूरत थी टीम को, और एक बढ़िया यहाँ पर पारी कही जाएंगे, क्योंकि जो स्कोर अब तक बना है 128,
तो एक भी बैट्समैन ऊपरी बल्लेबाज जो है यहाँ पर टिक नहीं सका, उसी के बदौलत यहाँ पर थोड़े से बैकफुट पर सोमेश कंटिन्यू करेंगे। इस बार रचनात्मक के शॉट थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल में, और जानते हैं कि हर्षद घड़ेकर और योगेश खवटनकर यहाँ पर अगर उसके बाद यहाँ पर जो 2 ओवर बाकी वो तक पहुंच सकते हैं। इस बार बढ़िया संपर्क वहां पर कवर्स की छांव में, फील्डर हालांकि सर्कल में मौजूद, लेकिन यहां पर वेलकम बाउंड्री आती ही बढ़िया शॉट। सिर्फ यहां पर टाइमिंग चाहिए थी और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ और एक चौका यहां पर जुड़ता हुआ टोटल में। इसी के साथ योगेश 41 पर पहुंच चुके हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। क्या यहां पर अपना अर्धशतक बना पाएंगे? 9 रन मात्र दूर अपने अर्धशतक से। एक संभली हुई पारी, एक बढ़िया पारी, और अभी भी डटे हुए, अभी भी यहाँ पर प्रयास है एक बढ़िया टोटल की ओर रुख करने के लिए। इस बार बढ़िया शॉट बैकफुट पर जाकर पंच किया, वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में सनेल मौजूद। 1 रन और 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। दूसरा रन अगर लेते तो मुश्किल में पड़ सकते थे। बढ़िया पिकअप और बढ़िया थ्रो। उसी के साथ 18 ओवरों का खेल होता हुआ समाप्त। 134 134 लग चुके बोर्ड पर 6 विकेटों के नुकसान के बाद। लीगल डिलीवर्स 2 ओवर इस इनिंग में बाकी, और 134 तो चाहेंगे कि 150 का आंकड़ा जो है पर पार करे, तो एक मानसिक दबाव यहाँ पर रहेगा कुरचोरेम वॉरियर्स के लिए। 150 का अगर यहाँ पर आंकड़ा पार कर लेते हैं तो जो 2 बल्लेबाज यहाँ पर मैदान पर खड़े हैं वो सक्षम, हर्षद घड़ेकर और योगेश, दोनों ही सक्षम। योगेश 42 व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं और मात्र 8 रन दूर अपने अर्धशतक से। और एक बढ़िया यहाँ पर इनिंग पारी, छोटी सी पारी, हर्षद घड़ेकर 12 रन 10 गेंदों में खेल बनाकर अब तक मौजूद। और ये दोनों की जोड़ी अगर ये 12 गेंदें खेल गई तो एक बढ़िया टोटल 150-55 के पार यहाँ पर जा सकती है। तो संजय नायक को यहां पर बुलाया गया है। आखिरी ओवर संजय की, 2 विकेट अपने नाम अब तक कर चुके हैं। 3 ओवर अब तक किए और 20 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं संजय। पहली गेंद पुल करने की कोशिश आई नहीं, वहां पर 1 रन यहां पर कंप्लीट। दूसरे रन जी नहीं, सनील वहां पर गेंद को फील्ड की और दूसरे रन की आशंका को समाप्त किया। हल्के हाथों से खेला था, 1 रन और अब स्ट्राइक पर होंगे। 43 पर पहुंच चुके हैं इस 1 रन के साथ। 143 हाँ तो तो अभी भी 11 गेंदे बाकी इस इनिंग की और 135 लग चुके बोर्ड पर। ये यहां पर लीडिंग एज लेती हुई गेंद, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद। थर्ड मैन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, उसी के साथ 1 ही रन यहां पर मिलेगा और स्ट्राइक फिर एक बार जाती हुई योगेश खवटनकर के पास। 43 व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रही है और अभी भी मौका है। इसके बाद 10 गेंदें आने बाकी और केवल मात्र 7 रनों से दूर अपने अर्धशतक से। बढ़िया शॉट, बढ़िया संपर्क, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद था। 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। तो बढ़िया ओवर इस 19वीं ओवर में संजय नायक को बुलाया गया है कप्तान ने, और अब तक कमाल की गेंद, एक भी बाउंड्री इस ओवर में अब तक नहीं आई है और 2 विकेट अपने नाम अब तक कर चुके हैं संजय नायक। इस बार फिर एक बार लीडिंग एज लेती हुई गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में और दूसरी बार ये गेंद विकी वहां पर फील्डर मौजूद, विकी के पास अच्छी फील्डिंग और 1 ही रन से फिर होना पड़ेगा संतुष्ट। यहाँ पर अपने ग्लव्स बदलना चाहते हैं
योगेश हवडनकर 44 रनों पर खेल रही है और 6 रन दूर अपने अर्धशतक से। तो कप्तान उम्मीद करेंगे कि एक यहां पर बाउंड्री आई, अगर छक्का 138, क्या छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा करेंगे? 6 रन मात्र दूर अपने अर्धशतक से। यहां पर ये वाइट की डिलीवरी ऑफ स्टंप से दूर रखने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ज्यादा बाहर कर बैठे, उसी की बदौलत यहां पर अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ और 139 इस एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। तो यहां पर अंतिम ओवरों में जैसे भी रन आए, यहां पर जरूरत रनों के, इस बार वहां पर सुनील फिर एक बार बहुत ही चुस्ती से, तंदुरुस्ती से बॉल की तरफ आती हुआ सिंगल इस गेंद पर भी आता हो। तो यहाँ पर चौके छक्के की जरूर दरकार थी, लेकिन जो लाइन और लेंथ के साथ संजय गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट अपने नाम अपने कॉलम में जरूर कर चुके हैं और वही कॉन्फिडेंस, वही लाइन और लेंथ के साथ इस ओवर में भी बढ़िया गेंदे। लेकिन इस बार बढ़िया संपर्क, लेकिन वहां पर फिर एक बार जाती हुई गेंद सुनील के पास, केवल एक ही रन से होना पड़ेगा इस बार भी संतुष्ट। और इसी के साथ 19वीं ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। 141 141 लग चुका है बोर्ड पर 19 ओवर के बाद। तो चंद्रेश देसाई इस आखिरी ओवर 6 गेंदे लीगल डिलीवरीज बाकी, और देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं स्कोर, कितना टारगेट यहां पर रखते हैं कुर्चरम क्रिकेटर्स के लिए जिनो ड्रैगन्स। चंद्रेश देसाई 3 ओवर अब तक कर चुके हैं और 17 रन देकर 1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, और इस अंतिम ओवर के लिए कप्तान ने भरोसा दिखाया चंद्रेश देसाई पर। पहली गेंद वहां पर पीछे प्रोटेक्शन मौजूद, लॉन्ग ऑन की दिशा में जाती हुई गेंद, और पहली गेंद सटीक निशाने पर। आखिरी ओवर अब तक 3 ओवरों में 17 रन देकर 1 विकेट अपने नाम चंद्रेश ने किया, उसी की बदौलत इस आखिरी ओवर पर यहां पर भरोसा दिखाया और बढ़िया शुरुआत इस ओवर की। इस बार थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन रन आउट यहां पर जी नहीं, रन लेने की कोशिश जरूर की थी हर्षद, योगेश ने यहां पर मना किया और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, ऑप्शन से बाहर की गेंद, अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ 143 से 1 रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। 45 पर खेल रहे हैं योगेश, 5 रन दूर अपने अर्धशतक से। इस बार कमाल का संपर्क, वहां पर फील्डर मौजूद और आसान कैच वहां पर फील्डर के लिए, और इसके साथ ये बढ़िया इनिंग की समाप्ति होती हुई। अब तक डटे हुए थे, बढ़िया यहां पर प्रदर्शन किया था, एक छोर संभाले रखे थे, लेकिन इस बार नीचे नहीं रह सके, जरूरत थी, दरकार थे एक बाउंड्री की, और उसी की तलाश में यहां पर अपना विकेट खोकर वापस आ रहे योगेश। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी, 45 रन 45 रनों की ये बहुत ही बढ़िया इनिंग, और इसी के साथ 7वां झटका लगता हुआ 143 के स्कोर पर।
तो एक समय ऐसा लग रहा था कि 120 130 के यहाँ पर ये पारी सिमट जाएगी, लेकिन योगेश की ये कमाल की बल्लेबाजी उसी की बदौलत अब तक स्कोर 143 तक पहुंच चुका है जिनो ड्रैगन्स। लेकिन अभी भी 4 गेंदें बाकी इस ओवर की, और देखेंगे कि कहां तक जाते हैं, कितना स्कोर यहां पर बना पाते हैं। साहिल धुरी कप्तान उतरे हैं मैदान पर आखिरी 4 गेंदें फेस करने के लिए। बढ़िया ये गेंद बहुत ही बढ़िया गति के साथ सटीक निशाने पर और सीधी जाती हुई कीपर के पास। तो 20वीं ओवर प्रगति पर, और क्या ये कमाल की गेंदबाजी आज रही है चंद्रेश देसाई। दूसरा विकेट पिछली गेंद पर अपने नाम किया, और 3 ओवर अब तक की है और केवल 19 रन। काफी किफायती, काफी बढ़िया इकोनॉमी के साथ आज अंतिम मुकाबला, और इस अंतिम मुकाबले में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा चंद्रेश देसाई का। इस बार यहां पर कुछ अतिरिक्त करने के प्रयास में ऑफ स्टंप से दूर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ और 1 रन जुड़ता हुआ। टोटल में 144 कुल स्कोर हुआ ऐसा वाइड के बाद। इस बार कनेक्शन बहुत ही बढ़िया, और यहां पर लगभग ये गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी, लेकिन क्या ये एफर्ट, क्या कमाल की ये फील्डिंग। जिस तरह की आज बॉलिंग रही है उतना ही अच्छा सपोर्ट फील्डरों द्वारा भी यहां पर रहा है, उसी की बदौलत ये अच्छी जो रन आज, क्या ये कमाल का एफर्ट बाउंड्री लाइन पर। रिप्ले में हम देख रहे थे कि लगभग ये रन इस गेंद पर 6 रन लिखे हुए थे, लेकिन यहां पर दाद देनी होगी, यहां पर प्रशंसा करनी होगी फील्डर की। फिर एक ये कमाल का शॉट, और इस गेंद पर किसी भी फील्डर को हिलने की जरूरत नहीं, सिर्फ गेंद को उठाकर बाहर से लाना है। और बहुत ही बढ़िया वेलकम बाउंड्री आती हुई इस 20वीं ओवर में, और इसी के साथ सॉरी ये छक्का था, और उसी के साथ 150 का आंकड़ा यहां पर पार कर लिया है साहिल दूरी। अंतिम ओवर में बढ़िया यहां पर कमाल की ये कनेक्शन। तो एक बढ़िया ये स्कोर 150 का आंकड़ा यहां पर छू लिया है, और फिर एक बार लेकिन इस बार रन आउट का आसान मौका, और अपना विकेट यहां पर खोना पड़ेगा। और इसी के साथ इस इनिंग की यहां पर समाप्ति 151 इन 20 ओवरों में कुल स्कोर बना है, और 152 2 रन बनाने होंगे यहाँ पर कुर्चोरेम वॉरियर्स को जीतने के लिए। का बढ़िया प्रदर्शन रहा। जो बॉलर आज इस्तेमाल किए गए सभी ने बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ लगातार अंतराल पर विकेट लेते रहे, उसी की बदौलत अंत में एक बढ़िया टोटल कहे जाएंगे, क्योंकि दूसरी पारी में रन चेज करना उतना आसान नहीं होगा। और उसी के साथ पारी पहली इनिंग की समाप्ति होती है। 151 लग चुके बोर्ड पर, और दूसरी इनिंग में जोड़ेंगे, चेस करते हुए देखेंगे कुर्चोरेम वॉरियर्स को। तो 152 रन ऐसा निर्णायक और अंतिम मुकाबले में यहां पर बनाकर ये टीम, कौन सी टीम ये ट्रॉफी अपने नाम करती है, तो जानेंगे इस दूसरी इनिंग में कुछ देर बाद। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।
आसात आनी मातशें जी आमची पीच आसा थंय मातशें मदीं वचून लायन अप करचें. चेअरपर्सन ऑफ सांगे म्युनिसिपल काउन्सिल श्रीमती प्रीती प्रसाद नाईक. आणि रोखडेच जशें हें जातलें तशेंच आमी इमिजिएटली सेकंड इनिंग्स 152 रनाची जी रन चेस आसा ते पळोवपाक सुरवात करतले. एक बारीकसो फोटो काडून
बारीकसो फोटो मोडलो पूण फोटो बरो व्हडलो जाल्लो आसा. लेफ्ट टू रायट धरले जाल्यार म्हाका दिसता जवळ जवळ 35 जाण आसा फोटोवा भितर. आणि फोटो काडून म्हाका दिसता आता जी आमकां सुरवात पळोवपाक जाय, जी फायनल आसा 152 रनाचे जो रन चेस आसा आणि सांगेम क्रिकेटर्साचे 22वें जे वर्स आसा, एडिशन आसा, ताजे ह्या कुर्चरेम वॉरियर्स आणि जिनो ड्रॅगन्स फायनलीक पाविल्ले आसा. 151 रन काडल्या जिनो ड्रॅगन्स आणि 152 रनाची गरज. पळोवया चॅम्पियन कोण जाता. एक बरी टोटल आसा, जे टोटल दोन्ही टिमीक चेज करपाची संद आसा. परत एकदा चॅम्पियन जावपाची संद आसा जिनो ड्रॅगन्साक, तशेंच कुर्चरेम वॉरियर्स हांकाय बी संद आसा ही फायनल जिखपाक. एक बरी इवन स्टिवन असो कॉन्टेस्ट हांगा पळोवपाक मेळटलो. So now let's see the run chase of 152 runs. The grand run chase of this 22nd edition. The big tournament, Sanguem cricketers, one of the most prestigious trophy, one of the most prestigious tournament in the leather ball cricket. Geno Dragons are the defending champions, and here is an opportunity of Curchorem Warriors to be crowned the champion for the first time by chasing 152 runs. Can they do it is the question. The total is not much. We expected a strong side of Geno Dragons to be scoring somewhere around 170, 180 in these finals, but it was not allowed to do so. Wonderful bowling and captaincy, I can say, from Vikas Desai as well, to restrict them to 151 runs. They'll be happy with this total, and it is going to be the start of the finals. Here comes a signal from Ajit Shirodkar. Akshu, Rupesh Asgaonkar to start the proceedings from the railway gate hand. Here comes Akshu to start and bowl to Tushar Sawant. And he's bowled up once again. First ball duck, a golden duck twice in a row for Tushar Sawant. Well, absolutely no feet movement, and he just comes and goes back. He has become like a Suryakumar Yadav recently, the superstar of Indian cricket with 3 golden ducks. And Tushar Sawant, well, now I think he will be a little quiet out in the dressing room, and in comes one of the finest batsmen, Vikas Desai, very elegant. They need a partnership. It was the same scenario in the semi-finals where Tushar got out of the very first ball, but after that they managed to get to 140, 145 runs. But it's not going to be same here. They are up against a much stronger outfit. They are much against a stronger opponent. So the situation is different. So wonderful start here. Lovely swinger, and whenever you are getting the swing, you should bowl the ball fuller. You should release the ball at a point that the ball is going to swing in the air. Tushar Sawant was deceived, no fit movement from him, and that in-swinger got rid of his off-stump. A rollicking start here in these finals from Akshu. So in comes Vikas Desai. They've got a slip, maybe a second slip you can say, placed. So free hit has been taken from Vikas Desai. Want to release the pressure immediately. So let's see where the fielders are being placed. Sagar Uddeshi is having a word with the captain, Sahil Dhuri. They want to get the mid-on towards the long-on region and trying to get the deep square inside.
So the extra cover has been brought inside, and maybe both at down the ground outside the inner ring. Once again, this time he goes over the mid-wicket region, can get a boundary. The fielder, Sagar Uddeshi, fields the ball and throws it quickly. Chance of a run out as well. Opportunity was there. This might go in towards the third umpire. They are going for the third run. This is a drama all across, and oh, what is happening here? This is going to the third umpire. This is going to the third umpire. This might be close. There's a drama all across. Well, this might be close. I cannot say this is out. This is touch and go. This is touch and go. Good throw here from Sagar Uddeshi, coming quickly, throwing the ball. And now the slow-mo of the software will come into effect. And Nikhil Dangi is doing the job here. Umpire is also... So, this is finals. We sometimes tell the players to do it fast, please speed up. But here we can't speed up because this one decision is going to be very, very important, and we have to be absolutely certain about this decision. So the frames are being brought back and forth. So both the square angle and the straight angles are looked into, and I guess the decision will be made now. So it is going to be a happy camp, and where the happiness is going to be, which will be directly saw on YouTube. And happy camp, yes, let's see the jubilation. In which camp? Here comes the light signal, and it is no. What is the light? And it is out. It is out. The bat was in the air. The bat was in the air when the ball had hit the stumps. So Munna has committed a mistake. If he has grounded the bat, then he would have been inside. He was watching the bowler, and bowler was very smart, hitting it back. So 2 wickets going down. One for Akshu, one in the form of run out. A fantastic fielding effort from the man in the deep, Sagar Uddeshi, the man from Pondicherry. An outstanding bowler. We'll see him in action in a short while. And Akshu Asgaonkar immediately just flick off the hand, and 2 wickets, rocking back the Curchorem Warriors in the first over itself. So Vikas Desai immediately asking for the free hit, going for the bigger shot, getting the single, going for the second run, but Munna did not ground the bat, and in return he was run out. So 2 wickets for just 1 run. Not a good start. Absolutely not a good start here of Curchorem Warriors. And it's going to be very difficult to come back. They need a partnership now, and with the man that has come onto the wicket, who has done so well at this point of time in all the additions that he has played.
It is Deepraj Gaonkar. This is the worst start that they could have hoped for. Worst start, Curchorem Warriors. This is down the leg side. So he's getting the in-swingers, just like how he had bowled Tushar Sawant with that in-swinger, the wild in-swinger. Ball looked as if it is going to pitch somewhere around 5th or 6th stump, but came back in sharply. And once again, this was an in-swinger as well. This is slightly drifting down the leg side. Once again, a similar sort of delivery. Once again, a wide drifting. Very nicely kept here by Rahul Kenny. Was definitely getting the in-swingers. It doesn't bowl with that much of pace. But certainly, the swingers, if he concentrates more outside the off-stump, it is going to be a much better line. Just how he got rid of Tushar Sawant. Important. Both these men are important on the screens for Curchorem Warriors. Vikas Desai was batting on one, and Deepraj Gaonkar has just come onto the wicket, not faced a single ball at the non-striker's end. Once again, nicely bowled. This is much better, asking the batsman to come on the front foot, a forward defensive shot with 2 wickets down. Now it is interesting to see whether both these batsmen are going to play the shots. Because a wicket at this point of the time, it is going to be very difficult for them to make a comeback. These both batsmen have the capabilities to play long innings, big innings. And Curchorem Warriors need their services today. And both are known to be big match players. They have done it in the past. They have within themselves to play big knocks during the run chase in a big match like this. So again, the free hit has been taken. Second free hit in the first over itself. One was taken by Vikas Desai. The second one is taken here by Deepraj Gaonkar. Going for that free hit. And I think they are celebrating. They are jubilating. They feel that they have got the man. They feel they have got the man. Third umpire coming into the action once again. Or whether it is a stumping. So not out is the signal from the third umpire. Not out, and the batsman stays. No arguments, please. Please carry on with the match. Well, only the 3 ways that you can get out is obstructing the field, handling the ball, and run out. Deepraj Gaonkar was definitely not going for the run. And that's the reason why it's a good signal from the third umpire. So 3 ways you can get out of the free hit. I think all the players will know it. So let's carry on with the match. A little scared here, but the drama is unfolding in these finals. Something or the other happening almost every ball. rules मशी कडक आहे. ऐसा 4 for the loss of 2. This time also is drifting down the leg side. This might be the third wide that he has bowled in this over. Well, it's been a long time. I felt that the first ball that Akshu has bowled was almost a long way away than when Tushar Sawant was back in the pavilion. And still the first over that continues.
This time nicely played with soft hands for a single, a deft touch on the leg side. Captain fields there. So maybe the wickets falling, maybe that run out, twice going towards the third umpire. And that's the reason why we feel that it's been a long, long over. And on top of that, 3 wides in between. Nicely bowled, very well played. So a good start, a steady start, and with a start with 2 wickets, I can certainly say Geno Dragons have got the best of Curchorem Warriors in this first over. At the end of one, it's 5 for 2. Sanguem cricketers, really, when you are organizing such a big tournament, you should be sincerely grateful to all the sponsors as well. Shri Nilesh Kabral, Honorable Minister for PW Law and Environment and MLA of Curchorem Constituency. Shri Subhash Faldesai, Social Welfare Minister and MLA of Sanguem Constituency. Shri Vijay Bab Sardesai, MLA of Hathoda Constituency and former Deputy CM of Goa Cricket Association, who has provided the balls and the umpires. Goa Livecast for live broadcast. Shri Abhijit Desai, Punch member of Village Panchayat, Netulli, Sanguem, Goa. Shri Balkrishna Odarkar, Councillor, Curchorem Municipality. DJ Farms, Shri Prasad Naik. Shri Naval Naik of Nano Engineers Private Limited. Shri Jason Pereira, JP Station. Shri Surpraj Shashikant Naik Tari, who has sponsored the Winners Trophy. Shri Rupesh Ratnakar Naik, who has sponsored the Runners Up Trophy. Shri Abhijit Naik. Shri Raghunath Moraskar, Madira Center, who has sponsored water. So we'll come back to the more sponsors a little while after the first ball from the second over to be bowled by Harshit Gadekar. There is a slip in place, deep third man and a deep point as well. One of the pace spearhead who has done excellently during his prime time for Goa Ranji team. Harshit Gadekar will be into action. A little cameo, a little momentum given by his bat during the end of the last 5 overs for this team, Geno Dragons. Now he is with the ball in his hand. The starts off with a good length area, very nicely and watchfully left. Normally an attacking batsman, both this, but now they know they have to resurrect this innings. Whenever you are losing 2 wickets just at the start in the first over itself, it's not easy for a naturally aggressive batsman to bog down a little bit, understanding that our wickets are going to be the key here. If we wait for some point of time in maybe another 5-6 overs, then certainly we can get close with a good partnership. And if we give away the wicket, if we play our shots, and if wicket is taken here by Geno Dragons, certainly they are going to be more upbeat. They feel that it is going to be very difficult for the middle order and lower middle order to chase these 152 runs. It's not easy with a strong bowling unit like Sagar Uddeshi as well, who will come later on. So the idea seems to be the best batsman of this side needs to face the most deliveries in this run chase. And I don't have to tell who are going to be the best batsmen. These two are undoubtedly the best batsmen of this team. So if at all they need a victory, they need to be crowned as the champions, they have to play a different game, not the usual playing the shots. In comes the next free hit. Third free hit, right in the second over itself. So a field change, deep third has been brought inside, and the man has been taken at a long off region, and a man in deep extra. Going for the wild slash, and it's going to be a wide. So it's going to be interesting that if he's going to take this one or don't take this one. So I think he has decided that he is going to continue with the free hit. By rightly asking the batsman whether you want to continue or not, batsman definitely says, yes, I want to continue against Harshit Gadekar.
Oh, this is a wild swing. This is swinging way too much. In fact, for both the bowlers, Arshad Gadekar, if you see, is bowling big outswingers, and Akshu on the other hand, on the other this side, is bowling the big in swingers. So both are getting big swings, not easy to counter. But only thing is that they are bowling little wide outside. Akshu is throwing down the leg side with that in swingers, and Harshad is doing the opposite way, bowling the banana swing outside off stump. This time also it was the swing. This time also it was swing. Once again, Rahul Kenny trying to be smart, looking at if the back leg was a little moved up here from the ground. Deepraj very well knows. And once again, second time, he's trying to get the batsman stump out of a free hit. I was talking about the previous ball. So now no free hit has been taken. The previous free hit has counted for nothing. It was a dodge ball. Wonderful swing here. Just loving the way he is bowling, Harshad Gadekar. He knows that his side is little up here, so I can bowl my deliveries. Beaten him all ends up. What a cracking delivery. Absolutely Jaffer asking the batsman to come on the front foot, and the ball is swinging such a beautifully. This is beautiful. This is lovely bowling here in the good length area. This is why we love to do the commentary here in leather ball cricket. There is so much to it, to tell, so much about it to speak, and so much for the crowd to enjoy as well. Lovely battle with the new ball between a wonderful batsman and a high caliber bowler. And there is a slip in place for that same catch, for that outswing, for that edge in the slip. So again, a big appeal, and definitely there were two sounds there. We could hear two sounds, and umpire also signaling off the bat, trying to flick it on the leg side. This was the ball that came slightly in. So he's controlling it very well today, Harshad Gadekar. That swing so far. At the end of 2 overs is a wonderful battle between the bat and the ball. So far, the ball is on top of the bat. The ball is swinging both ways, and it's going to be interesting in the next few overs as well. It's 9 for 2 in 2. So also for the further sponsors, jersey sponsor Star Enterprises Sanguem Goa, Advocate Viraj Nagekar, Shri Keros Cruz of Curchorem, Councillor of Sanguem Municipality, Shri Gopi Naik of Digo Enterprises, Shri Amit Salilkar, Krichi Kendra, Shri Raviraj Upadhyay, Shri Sangameshwar Naik, Councillor Sanguem Municipality, Shri Sudesh Salilkar, Shri Kupesh Sapre, Raghuveer Kosambe, Jarvis Fernandez. In comes the next over. This time watchfully played here. Good fielding, chance of a run out, but makes it well in the end. He's a fast runner. He's got quick legs as well. So talking about the sponsors, Jarvis Fernandez, Shri Ashish Karmalkar, Shri Vishal Bhuimbar, Advocate Ishwar Kuttikar of Yogita Enterprises, Shri Ame Kosambe, Advocate Siddesh Tari, Shri Rupesh Naik of Ice Cream World, Shri Lakshman at Pramod Naik, who has sponsored Best Batsman and Best Bowler awards as well. And coming on later. This was a bad ball. You can say a short ball. If he had got a bat, easy boundary it could have been. So maybe not able to control this particular delivery. Once again, coming back to the sponsors, Shri Durgesh Sangekar, who has sponsored the Man of the Tournament award. Shri Siddharth Marathi, who has sponsored the Man of the Final award. As we sincerely express our grand gratitude to Curchorem Cricket Club. This time, no chance of a single there. Shailesh Miskin in the short square leg region. Vikas Desai. So far,
it's 11 on the board. 2.2 overs. Little extras have been given away by both these bowlers. Still no boundary balls, no loose balls. This time also it was Shailesh Miskin, a very loud call, clear call from the non-striker's end. And also thanking the Curchorem Cricket Club and Sri Rohan Gauns Desai, the Secretary of Goa Cricket Association, Sri Daya Pagi, the Treasurer of Goa Cricket Association, and Sri Vikas Bhagat for their help and support for the tournament. These were all the sponsors because of whom such a grand tournament was possible. We sincerely express our gratitude to everyone. Oh, this is nicely flicked away. Nicely flicked away. Just drifting down the leg side. That was enough for the class of Vikas Desai to just get on to the top of that ball and just flick it away for 4 runs. So unable to control the swing here, and Vikas Desai says, well, I just love it in that region. If you can bowl few more, and I can give it a few more runs as well. Taking the score to 15 in the 3rd over. So far, the crowd is little quiet. They are intensely watching this match. Have profound interest in the red ball cricket, the Curchorem cricket lovers. This ball also was to be hit. Although there is a protection in the but with the ball down the leg side, Vikas will definitely go for his shot. Another wide. Taking the score to 16 runs for the loss of 2 wickets in 2.4, moving at the run rate of 6 runs per over. So the wides are definitely helping to take the score along with those singles that they are getting off the extra. This time watchfully played forward defensive shot here from Vikas Desai. Doesn't want to take any sort of risk when it is bowled in these areas, at the good length areas, just wide outside off stump. The swing, the in-swing has to be negotiated here. So far, these batsmen are doing a very good job. This time played with soft hand, an easy single that is. And that single will finish over number 3, 17 for 2, chasing 152 runs in 20 overs. Need another 135 runs in the remaining 102 balls. Bowling continue, right arm out you. White Once ball. again, this is maybe he's trying to get the ball pitched in from the leg stump and trying to move the ball away from that leg stump, and maybe trying to bowl that magical delivery that gets rid of the top of the off stump. Well, those deliveries happen once in a lifetime. Very difficult to bowl. Those deliveries just happen sometimes. This is much better. This is much better. This is the same delivery that he beaten outside the off stump for the other batsman, Deepraj Gaonkar, trying to stretch to play that cover drive.
This had started on the 16th of March and through the opening ceremony, a grand opening ceremony, which was started by from the hands of Sri Nilesh Kabral and Sri Subhash Faldesai, with the inaugural match that was played of Curchorem Warriors, and they are now playing the last match as well. Geno Dragons considered to be the strongest side on paper. Oh, once again, this is good delivery. This is lovely bowling. This is great outswingers. Well, if at all you are at the square of the wicket, you are watching it live, you won't understand it. If you watch it on YouTube, then on Goa Livecast, you will understand what Harshad Gadekar is trying to do. Much better coverage, much better angle at the front. Lovely fight here. Is getting the ball in the right areas, and that's the reason why I got the deep fine leg inside now. This time in the air, and it is just a chip shot. It didn't go for the full-blooded flick, you can say. So just a chip shot for a single. Didn't go hit wholeheartedly, and just a single taking the score to 19. So doing steadily here, not playing those shots that we are used to seeing Vikas Desai and Deep Raj Gaonkar. I can say a commendable job. It's not easy to curb your natural instincts. They are so far doing it in a nice way, nice manner. This time, just wanted to play it on the leg side in that open space. Getting straight back to the bowler. Sagar Udeshi's spell is going to be very, very crucial. The man has picked up 5 wickets in the previous game, and important bowler. And that's the reason why both these batsmen need to stay on the wicket just to face Sagar Udeshi when he comes on to bowl. So slip has been removed, and they want a man in the short mid-wicket region. This is good bouncer. Surprised here. This new ball is definitely talking in the air, and Harshad Gadekar is even using it to his good advantage. He is using the brains well. He saw the batsman coming down the track and bowled it a little shorter. So bouncing a little more, and surprised Deep Raj Gaonkar over there. Rahul Kenny just going down and asking the batsman, are you all right? So the small injuries needs to be very, very careful here. Deep Raj, that might be hurting. It's just at the elbow joint, or maybe a little on top. This time played nicely on the leg side. So there is a protection in the deep which will fetch him on just a single. So doing it a steady way. This is right now a steady approach, a calm approach from both these batsmen. And at the end of 4, it is 20 for the loss of 2. Dipraj is playing on 4 of 12 balls, and Vikas Desai is playing on 8 of 11.
So let's see now. The man himself that everyone is waiting to see. The man who has represented Pondicherry at the highest level in Ranji team and also played in first class cricket in Sri Lanka. Pick of the bowlers. I feel he's at the top of the chart with the wicket column. 5 wickets in the previous game. Sagar Uddeshi, what a fine bowler he is. Splendid performance against Goa Ranji team in GCA Grand Porvorim, fetching 10 wickets in the match. A class talent, left arm orthodox bowler, bowling from around the wicket. Sam nicely played by Deepraj Gaonkar, and that's how I guess you should play to the bats, to this bowler. It's quite tall as well as a left arm orthodox bowler, trying to come across around the wicket. He's got the height, so ball comes from the trajectory with his arm almost coming at 7 feet. So you have to gauge the flight well. Oh, lovely ball here. Lovely ball. And at this pace, if the ball is turning sharply, it's not going to be easy. And that's the reason why both these batsmen needed to stay to face them off. It's a face-off between a great left-arm orthodox bowler and a very technically strong right-handed batsman. This time nicely flicked away. There is a man in the deep. Lovely piece of fielding here. Diving in at that dim mid-wicket region, stopping the ball. The fielding will even more make it more difficult for the Curchorem Warriors side to score runs. This time also bowled nicely, played very well with soft hands, doing it when you're technically correct, when you're technically sound, when you see the trajectory of the ball, and when you can catch it way early in your eyes, it's much better, much easy to use your feet. Oh, that's a lovely shot. There is a man in the deep, and it has been saved. This is a crispy shot here. Slightly up, slightly pitched up, and he was up there with his drive. It's a fine driver in the covers region and at the long off as well. So far 5 singles of the first 5 balls. This is beautiful batting here. See how well both have negated Sagar Uddeshi at the moment. They have just been taking singles with a steady approach. Watching the ball coming onto the bat and playing it late was the key. So very, very interesting this battle between bat and ball. And Sagar Uddeshi's first over has been negated with 6 singles of his 6 deliveries. And the brains are being utilized to the utmost advantage so far from both these batsmen, Deepraj Gaonkar and Vikas Desai. Team is at 26 for 2 in 5 overs, requiring run rate is 8.40, 126 in 90 balls. So the interestingly poised match will further be updated here from the voice of Sanket Gaonkar. तो 5 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ। 26 लक्ष्य के बोर्ड पर 2 महत्वपूर्ण विकेट जरूर खोई है, लेकिन इसके बाद विकास देसाई और दीपराज गांवकर यहाँ पर संभली हुई शुरुआत थोड़ी सी स्लो है, लेकिन विकेट हाथ में रहेंगे तो अंतिम ओवरों में यहाँ पर बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, वहाँ पर शॉट कवर में खिलाड़ी मौजूद और एक पारी यहाँ पर संभली हुई पारी। अब तक दोनों के बल्ले से यहाँ पर बड़े शॉट ज़्यादा देखने को नहीं मिले। इस बार पॉइंट की दिशा में वहाँ पर डीप में खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी यहाँ पर हड़बड़ाहट, लेकिन अंत में 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट।
तो दो बड़े आक्रामक खिलाड़ी दीपराज घावकर और विकास देसाई, हालांकि उनके नेचर के विपरीत यहाँ पर ये यहाँ पर इस बार दरकार थी, जरूरत थी, उसी की बदौलत एक संभली हुई पारी यहाँ पर देखने को मिल रहे दोनों ही बल्लेबाजों के। इस बार बैकफुट पर जाकर फिर एक बार पंच वहां पर पीछे और हम इस फील्ड क्या दूसरा रन यहाँ पर जी नहीं संभाला अपने आप को, फिर से वही शॉट उसी दिशा में उसी फील्डर के पास और एक रन जुड़ता हो टोटल में। तो एक एक करके यहाँ पर स्ट्राइक का रोटेट करके यहाँ पर जानते हैं कि विकेट्स हाथ में रखेंगे तो अंतिम ओवरों में यहाँ पर एक्सीलरेट कर सकते हैं। फिर एक बार उसी दिशा में बैकफुट पर जाकर पंच किया, वहां पर खिलाड़ी 3 बार एक गेंद जो है उस खिलाड़ी के पास इस बार गई। 28 इस एक रन को जोड़कर भाई कुल स्कोर 29 यहाँ पर करेक्शन विराट तेंदुलकर हमारे स्कोरर। और इस बार यहाँ पर फिर एक बार बैकफुट पर जाकर ये खेला शॉट, लेकिन इस बार स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी तैनात, एक एक रन यहाँ पर महत्वपूर्ण और डॉट गेंद यहाँ पर जरूर प्रेशर बढ़ाएंगे बल्लेबाजों पर, उसी की बदौलत यहाँ पर जो बढ़िया गेंदें हो रही उस पर हल्के से प्रहार करके एक एक रन बटोरने की कोशिश यहाँ पर। फिर एक बार बैटफुट पर जा पर वहां पर खिलाड़ी कवर्स का और बढ़िया ये रन, दूसरा रन जी नहीं चाहते कि यहाँ पर एक रनआउट के रूप में विकेट गिरे, क्योंकि ये पार्टनरशिप यहाँ पर महत्वपूर्ण, जो दो बल्लेबाज यहाँ पर जो क्रीज पर मौजूद सारा दारोमदार उन पर यहाँ पर निर्भर। उसी के साथ 6 ओवरों का खेल समाप्त, 31 लग चुके बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। दीपराज घावकर 9 रन बनाकर खेल रहे और विकास देसाई 14 के रनों पर यहाँ पर खेल रहे। तो दूसरी विकेट का पतन जब हुआ था उसके बाद ये पारी को यहाँ पर संभाला और अब तक बढ़िया ये पार्टनरशिप साहिल धुरी कप्तान अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है बॉलिंग के लिए। जो बॉलर आज इस्तेमाल किए तो सभी ने बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग की। पिछले पहली इनिंग में भी देखा था कि शुरुआती ओवर में काफी बढ़िया बॉलिंग रही थी, लेकिन उसके बाद अंतिम ओवरों में थोड़े से रन यहाँ पर बने, उसी की बदौलत 151 हिट कुल स्कोर बना था। इस बार हल्के हाथों से खेला और सटीक शुरुआत साहिल धुरी कप्तान है, जानते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस फाइनल मैच में यहाँ पर एक बड़ा स्पेल, अच्छा स्पेल अगर साहिल धुरी का रहता है। फिर एक बार बैकफुट जाकर पंच वहां पर खिलाड़ी मौजूद, डीप में 1 रन और जुड़ेगा टोटल में। तो बल्लेबाज जानते हैं कि उसके बाद एक गोल्डन ओवर आनी बाकी, पावर प्ले बाकी है, तो उस समय यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं स्कोर जो है बाउंड्रियां हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल विकेट हाथ में रखना चाहते हैं, विकेट बचाना चाहते हैं और बढ़िया पार्टनरशिप चलती हुई दोनों के बीच। इस बार पटकी हुई गेंद मिड विकेट क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और 1 रन यहां पर जुड़ता हो टोटल में। ये बढ़िया शॉट, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी इस बार बाउंड्री पर तैनात और सीधा शॉट, हालांकि शॉट अच्छा था लेकिन सीधे फील्डर के पास और 1 रन जुड़ता हो टोटल में। ये यहां पर हवा में गेंद, देखते हैं कहां तक जाती है, फील्डर बॉल के नीचे और ये यहां पर मौका, और फील्डर की यहां पर गलती नहीं कर सकते क्योंकि
वहां पर किरणें सनलाइट सीधी आंखों पर आ रही थी, उसी की बदौलत ये कैच यहाँ पर बहुत मुश्किल लेकिन लगभग हाथ में आ चुकी थी, अपने आप को सेटल किया था फील्डर ने, लेकिन अंत में ये हाथ से चिटकी, उसी की बदौलत ये मौका यहाँ पर मिला है। चालू रे चार्ज 78 इस बार अच्छा शॉट, फिर एक बार मिड विकेट क्षेत्र में जाती है और पिछली गेंद पर दीपराज गांव का जो मौका मिला है, कितना यहाँ फायदा उठाएंगे मौके का। तो कैच वहां पर तीसरे विकेट का चांस था, लेकिन फील्डर ने हालांकि प्रयास बढ़िया किया था, लेकिन एक मौका यहाँ पर जरूर गंवाया। उसके साथ 7 ओवरों का खेल यहाँ पर 17वां समाप्त, 36 लग चुके बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। तो अभी भी 78 लीगल डिलीवरीज बाकी और 116 रन यहां पर बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो दोनों जो बल्लेबाज मैदान पर मौजूद कभी भी अपना गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जानते हैं बहुत सारी क्रिकेट खेली है, पूरा एक्सपीरियंस उनके पल्ले में। तो मैच के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से यहां पर हो रही है बैटिंग। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश जरूर, लेकिन बढ़िया गेंद योगेश नए बॉलर जिन्होंने अच्छी बैटिंग, जो स्कोर टोटल 151 का जो टोटल, उसमें एक बड़ा सहयोग, बड़ा योगदान रहा था योगेश का। इस बार यहां पर मौका हाथ खोलने का, ये खराब गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और पूरा फायदा उठाते हुए एक जड़ दिया यहां पर बढ़िया कमाल का चक्का। बॉल गया कि नहीं? विकास देसाई जानते हैं कि यहां पर एक मौका था और दोनों हाथों से इस मौके को भुना और जड़ दिया इस गेंद पर चक्का। खराब गेंद, पहली गेंद बढ़िया यहां पर शुरुआत की थी योगेश ने, लेकिन इस बार कुछ अतिरिक्त यहां पर प्रयास करने की कोशिश में खराब गेंद और पूरा खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा। तो एक मोमेंटम यहां पर बनता हुआ एक छक्का, एक कॉन्फिडेंस यहां पर जरूर बड़ा होगा। फिर एक बार उसी दिशा में और लेकिन इस बार फाइन लेग की दिशा में जाती हुई, इस बार कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इतना अच्छा था कि चौके के लिए जाए। तो फिर एक बार छक्का लगाने की यहां पर कोशिश थी, वही गेंद थी, फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन इस बार चौका आता हुआ। तो 2 गेंदों में ये पहला छक्का, उसके बाद चौका, तो थोड़ा सा मोमेंटम जो है शिफ्ट होता हुआ कुर्चोरेम वॉरियर की तरफ से। इस बार बढ़िया गेंद, लेन को खींचा और जानते हैं कि 2 गेंदों में स्कोर बन चुका है, चौका एक छक्का आ चुका है, यहां पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं और डिफेंस किया इस गेंद को। फिर एक बार बैकफुट पे जाके बढ़िया ये शॉट, वहां पर डीप में प्रोटेक्शन मौजूद और जानते हैं स्कोर आ चुका है इस ओवर का, तो अपना स्ट्राइक का यहां पर बदलने की कोशिश और फिर एक बार दीपराज घावकर के पास जाता हुआ स्ट्राइक। 47 हुआ है स्कोर इस एक रन को जोड़कर। फ्रंट फुट पर इस गेंद को खेलने की कोशिश और उसी के साथ 8 ओवरों का खेल होता हुआ समाप्त, 47 लग चुके बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। 72 लीगल डिलीवर्स बाकी और 105 रन यहां पर अभी भी बनाने हैं। तो T20 का मैच यहां पर ये स्कोर आसानी से बन सकता है अगर विकेट्स हाथ में रहे। तो यहां पर की फैक्टर जो है विकेट्स अपने हाथ में रखना है। तो कोई भी टीम हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की टीम हो, जब विकेट्स गिरते हैं तो दबाव, मानसिक दबाव जो है वो बॉलरों पर, बल्लेबाजों पर आ जाता है। और यहाँ पर दूसरी विकेट के बाद जिस तरह की पार्टनरशिप बनी, तो पिछली ओवर में एक मोमेंटम, एक बड़ी ओवर यहाँ पर आई है। उसके बाद यहाँ पर जो कैलकुलेशन, जो
रन गति थोड़ी सी धीमी चल रही थी, उसको यहाँ पर मेकअप करने की कोशिश। और साहिल धुरी पहला ओवर बढ़िया रहा था, केवल 5 रन दिए थे अपने पहले ओवर में, और फिर एक बार अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है बॉलिंग के लिए। पैरों पर गेंद थी, स्क्वेलिक की दिशा में खेली, हल्के हाथों से 1 रन और स्ट्राइक दी अपने पार्टनर को। विकास देसाई 29 रन 28 गेंदें खेल चुके हैं और 29 रन बनाकर एक बढ़िया यहाँ पर सूझबूझ भरी पारी। इस बार थोड़ी पटचकर उतली, लेकिन बढ़िया शॉर्ट कवर का खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन और जुड़ता हो टोटल में 49 कुल स्कोर हुआ इस 1 रन को जोड़कर। फिर एक बार बढ़िया ये शॉट मिड विकेट क्षेत्र में खेली गई शॉट, डीप में प्रोटेक्शन मौजूद, जब तक फील्डर कलेक्ट करते हल्के हाथों से खेला था और समय था बल्लेबाजों के पास 1 रन यहाँ पर कंप्लीट करे। उसी के साथ 50 का आंकड़ा यहाँ पर 9वीं ओवर में छू लिया है कुर्चरेम वॉरियर्स ने। बढ़िया ये पंच, फिर एक बार यहाँ पर जानते हैं कि इस 1-1 रन का महत्व कितना है। अगर स्कोर बोर्ड चलता रहे तो बल्लेबाजों पर प्रेशर जो है बहुत ही कम आता है। और उसी के साथ 50 की पार्टनरशिप दोनों में ही कंप्लीट। बढ़िया ये सूझबूझ भरी पार्टनरशिप विकास देसाई और दीप राजगांवकर के बीच। फिर एक बार बढ़िया शॉट, लेकिन साहिल धुरी इस बार अपने ही 51 पर पहुंच चुका है स्कोर। 9वीं ओवर है प्रगति पर। ओ ये बढ़िया कमाल की गेंद पड़कर थोड़ी सी नीचे रही, समझ नहीं पाए। उसी के साथ डॉट गेंद के साथ की है अपने इस ओवर की समाप्ति। केवल 4 रन आए इस ओवर से और बहुत ही किफायती ओवर रही साहिल धुरी। और इसी के साथ 9 ओवरों का खेल होता हुआ समाप्त। 51 लग चुके बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान के बाद। और अभी भी 11 ओवर बाकी इस इनिंग में आने और 101 रन यहाँ पर बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो विकी बार्सर मैच जो है किसी भी ओवर ये मैच अब तक नहीं गई है। अब तो विकेट्स अगर हाथ में रहे, ये अगर जोड़ी चलती रही तो ये मैच जो है कुर्चरेम वॉरियर्स अपने नाम कर लेगा। अगर विकेट्स जो की फैक्टर है, अगर 2-3 विकेट अगर यहाँ पर लेने में कामयाबी मिलती है जीनो ड्रैगन्स को, तो ये मैच जो है किसी भी तरफ रुक कर सकता है। तो इस जोड़ी पर काफी कुछ निर्भर। पिछले ओवर में 50 रनों की साझेदारी दोनों में ही हुई कंप्लीट। बोलिंग कंटिन्यू। बैकफुट पर जाकर बढ़िया कनेक्शन, बढ़िया संपर्क, पीछे फील्डर मौजूद। एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। और योगेश जिन्होंने 2 ओवरों में 16 रन दिए थे, 8 की इकॉनमी, और तीसरे ओवर के लिए कप्तान ने फिर एक बार बुलाया है योगेश को। और इसी के साथ 52 एक रन को जोड़कर हुआ है कुल स्कोर। ओ बढ़िया ये यहाँ पर शॉट फील्डर से दूर, और यहाँ पर बहुत देर बाद जरूर आई, लेकिन ये वेलकम बाउंड्री। यहाँ पर मौका मिला एक हाथ खोलने का, शॉट ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, मौका मिला और उस मौके को दोनों हाथों से भूनकर जड़ दिया है चौका। 34 व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे विकास देसाई। एक बढ़िया महत्वपूर्ण पारी इस फाइनल में। जरूर प्रेशर रहता है फाइनल का, लेकिन
जो प्रेशर को हैंडल करता है और एक अच्छी पारी खेलता है, वही एक बढ़िया क्रिकेटर, बढ़िया प्लेयर कहा जाता है। और वही करते हुए एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी प्रेशर में जिस तरह से खेलता है। ओ ये कमाल का शॉट, और कहां तक जाती है? जी हां, पूरे 6 रन यहां पर जुड़ते हुए टोटल में। क्या ये कमाल का शॉट? थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ जरूर थी, थोड़े से बैकफुट पर गए, और ये कमाल का शॉट आता हुआ मिड विकेट क्षेत्र में विकास देसाई के बल्ले से। जो खामोशी, जो तूफान के पहले की खामोशी थी, तो धीरे धीरे ये तूफान यहां पर उड़ता हुआ, और पिछले ओवर में देखा था कि उस ओवर में एक चौका एक छक्का आया था, और इस ओवर में भी वही करते हुए एक चौका, उसके बाद ये कमाल का छक्का। तो 40 पर पहुंच चुके हैं इस छक्के के साथ व्यक्तिगत स्कोर पर विकास देसाई, और 62 वह है कुल स्कोर। इस बार थोड़ा सा गाइड किया डेढ़ में शीशा में खिलाड़ी सर्कल में मौजूद, और सूझबूझ भरी क्रिकेट, एक बढ़िया एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी की 2 बाउंड्री यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद हल्का सा पुश करके स्ट्राइक दिया अपने पार्टनर को, और खुद जाकर खड़े हुए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। ये बढ़िया शॉट, एक रन यहां पर जरूर मिलेगा। फिर एक बार बैकफुट पर गए, लेकिन पॉइंट का खिलाड़ी वहां पर मौजूद पीछे। तो चौके और छक्के के बाद यहां पर एक एक करके मैच को आगे बढ़ाने की कोशिश, और इसी के साथ 10 ओवरों का खेल हुआ है समाप्त। 65 लग चुके हैं बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। और इसी के साथ यहां पर कमेंट्री में चेंज। आगे का हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी कमेंटेटर हमारे सीनियर कमेंटेटर हरीश काकोडकर होंगे अगले अपडेट देने के लिए। So to bowl the golden over, it's going to be the golden arm from Pondicherry for Geno Dragons. Sagar Udeshi has been given the job in this short end. 65 for 2 in 10 overs. So very good finals. What an intriguing and interestingly well-poised finals after 10 overs. Very difficult to know where the match is heading. Just one good over for the bowling unit. They will be well back in this match. And such a lovely partnership. When the bowlers were bowling so well, they have given them the respect, played defensively, got those singles and doubles. And then when there was a loose ball, because as I went for that ball and went for the 6 runs, slightly expensive that previous over. Doing it the most sensible way. In cricket, sensible play is very much required, which has been showed by both these batsmen. In comes Sagar Udeshi. That's such a cracking delivery. Very first ball. Yeah, you want a golden over? Take that golden ball and face that, he says. And get ready for the music. He must be telling to the batsman. Again, very nicely bowled, very watchfully played. Whenever you get a lovely delivery, unplayable delivery like that, how Vikas Desai has got, you, as a batsman, you just have to forget it. In the game of cricket, every delivery is different. You cannot bowl those scotches every now and then. And just bow down to the caliber of this man. This time, nicely swept away. What a fine shot. What a lovely shot. Sagar Udeshi has been seen for quite some time now, and he was using the pace of the bowler, just swept away, not a full sweep shot you can say, but using the pace,
And a pedal sweep or a half sweep, half pedal, you can say that shot. But most important thing is he's getting the boundary. How well they have played so far up till this point of time. Oh, he went for that. It's going to be a stumping chance. And after a long time, this is going to be close. He went for the inside out shot in the extra cover region, trying to get one more boundary in this golden over. And the bowler is asking the batsman, have you dragged your foot back or is it in the air? But what a time. This is the most important decision. Curchorem Warriors will be looking closely on their YouTube and also the supporters of Geno Dragons. Everyone will be switching on to the YouTube on Goa Livecast to see what the decision is going to be. As a cricket analyst, as everyone is, they must be seeing as this is an important time. This is going to be a very important decision. Deep Raja looks very confident. But the bowler feels we might be in for a chance. So that was quick stumping here from behind the wickets. But the legs were also quick and it was back inside the popping crease. So he's safe. He's quite safe here, Deepraj Gaonkar. So the fielders are back into action. Little moment of excitement and joy for the fielding camp. It all ended up with a dot ball. Oh, he is going for the reverse hit and he does it. One an orthodox sweep. Now a reverse hit against Sagar Udeshi. He is not liking it. He is absolutely not liking it. He's furious about this shot. How can you do that to me when I have been the highest wicket taker in this tournament and also did fabulously against your Goa Ranji team? Well, he says my caliber is also a Goa Ranji team player. So it's a fight between Goa Ranji team batsmen. Oh, this is very good batting, skillful batting, very nicely played. Oh, chance of a run out. What has happened over there? What has happened over there? Deepraj always felt that it's going to be single run and he's looking at his partner. They were going so well up till this point of the time. How can this miscommunication error happen at this point when everything was going so smoothly? Suddenly, like an earthquake has shaken the Curchorem Warriors camp. The tremors are felt in the dressing room and the tremors will be felt when the new batsman comes into the crease. This is going to be an interesting finals. There is going to be one moment for everyone to come back in this match and it was this moment where the wicket has been gifted away here by Deepraj and the communication gap between him and Vikas Desai. Third wicket down at the score of 74. त्याचा विचार मार थंय शुभमा काढला बाय ए बाहेर बाहेर कोणा काढला शुभमा शुभमा बाहेर काढला So super sub has been taken. So Ajinkya Kurtarkar has been brought inside as a super sub. And Shubham Naik, who is a batsman, has been given a go back in the dressing room. They want services of a good bowler at this moment. That's the reason why Ajinkya Kurtarkar has come on to bowl. So 83 is the score in 11 overs. 83, so golden over. Well, you can say it went both ways. They got the boundaries, but the
bowling unit, Geno Dragons, got an important wicket as well. I think Vikas Desai now must feel that just what has happened has happened. There's no point in cribbling around with that wicket. They should not play in his minds, and he should see that he takes his team home with a wonderful run chase. Score is 83 for the loss of 3 in 11 overs, requiring 69 runs in 54 balls. That's the equation now. Not difficult, not too easy as well. In comes Ajinkya Kurtarkar. He'll be bowling to Vikas Desai. This is in the air. It's going for 6 runs. Or is it going to be a catch? Straight out. What an effort. Vikas Desai first up. This is not an easy shot. This is not an easy shot. At a time that you have seen your partner going back into a dressing room, maybe the mistake of the same batsman who has hit 6, and it, in spite of playing that in your minds, he still goes for the big shot and he gets the 6. What a mindset he must be having, a strong mind, because Desai, the captain of the side, did a fantastic job during the captaincy part in the bowling department, and now he is playing an innings of class and a substance, playing on 49 now. And he plays, what a magnificent 50. What a lovely 50 from this class man. Outstanding batting talent of Curchorem, showing once again why he is highly rated in the cricket circles. A commendable innings. Well, he respected all the bowlers around when they were bowling so well. And then he tried to play his shot, got those 6s. Whenever there was loose ball, first by Yogesh Kautankar, then this ball by Ajinkya Kurtarkar, he went for the 6s. And this is a real innings of substance while the team needs the most. Free hit has been taken. 4th free hit has been taken here by Somesh Prabhu Desai. So I guess the right man sent here after their Ranji superstar who was doing so well with a good partnership between him. Deepraj Gaonkar is a good replacement for Deepraj at the moment. Somesh Prabhu Desai, wonderful all-rounder, did fabulously with his 3 overs, picking the wicket of Shailesh Miskin. This is a full toss ball, outside off stump. The super sub is doing a super job here for Curchorem Warriors. He's bowled one shot. He has won the world full toss outside the off stump. And they required much better here from Ajinkya Kurtarkar. Well, the batting unit are doing a fabulous job against him at the moment. 62 runs required in 52 balls. What a finals. Nicely bowled. No chance of a single. Shailesh Miskin comes closing in. This is much better here. Bowling straight wicket to wicket. So what are the options this team has? Shailesh Miskin also bowled very decently in the previous game, getting the important wickets. He has got the golden arm as well. Can they try him? Sagar Uddeshi has been negated very well when Vikas Desai and Deepraj Gaonkar were batting. They have not given him any chance. They have given him the respect. But when the time comes, he went for the sweep shot and the reverse sweep as well against that and got the boundaries. Pretty good golden over for Curchorem Warriors. But now when Deepraj back, is innings required from this man. Oh, that's a lovely ball. Very good delivery to end 2 dot balls in a row. Finishing up well here. Ajinkya Kurtarkar at the end of 12 overs and 94 for the loss of 3. Vikas Desai with his magnificent 50 of 39 balls and 4 of 4 is Somesh. Thirteen.
If Geno Dragons want to win this and make a comeback, it is this man on the screens. This wicket is the most requirement at this time, at this juncture. Very nicely bowled, very nicely played. And if at all there are half chances that they are going to take against trying to have a shave at the non-striker's end, doing it a very, very clean way. No chance is given at the moment so far from the bat of Vikas Desai. Still the job is half done. Still the job is far away. This is a good ball and this is an outside edge. Well, outside edge or inside edge doesn't matter at this point of the time. A boundary is a boundary. And he has played that towards the third man region. Not a profound edge, but definitely is glided down towards the third man region. A wonderful finals we are witnessing here. This time played nicely down the leg side. Good effort here from the fielder in the short fine leg region. Just going to get a single. So Somesh is also doing a fine job in a small innings so far what he has played. 100 up here for Curchorem Warriors in the 13th over. Well, 100 up was for Geno Dragons in the 14th over. So Curchorem Warriors are still doing a fine job, much better. This time bowling wicket to wicket. Vikas Desai watching it carefully, coming off to this bat, playing on the front foot. No risky shot whatsoever required. Maybe there is a chat from both these men. Maybe Somesh is telling, I am going to take the risk at all. You need to see this innings through. You have seen throughout. Once again, this time no chance of a single. You have done the hard way. You have taken us close towards. You might be tired as well as Vikas Desai is. And they require his services maybe till the 18th or 19th over when the game might come a little closer. This is once again good bowling. Whenever you feel that there is a boundary and Curchorem Warriors are having a good comeback, suddenly the bowlers are bowling 2 or 3 dot balls in a row, which is still piling their asking run a little up. At the end of 13 overs, it's 101 for the loss of 3 and 51 runs required in 42 balls. The equation is still the same. If you feel that is going in towards the batting side, we have seen strange things happening in the game of cricket. Every other day, you can see miracles happening. So Curchorem Warriors will be hoping that there is no miracle at this point of time. They just want a clean game from the man who is batting beautifully after scoring his 50. And they require his services till the end. So if at all someone has to take a step, a magical step or something innovative, then it's going to be the bowling unit of Geno Dragons. एक मिनिट 20 मिनिटं उरल्या 20 मिनिटांभितर 8 ओव्हर कशे ना म्हणलं रे 8 ओव्हरी 20 मिनिटांनी घालतले नाही टाइम माझ्या आसुकशे आयले वयर 2 वरा आता हे दोन जण चलना खंय त्यांचे 10-15 मिनिटात So change in bowling. सगळं कॅल्क्युलेट केलं तू काय टेन्शन घेणार रेट Shailesh Miskin bowled very well in the previous game, taking important wicket, bowling a little quick off spinners from round the wicket at this point of time. And last of the free hit. So they have taken the free hit against Shailesh Miskin. Vikas Desai has decided this is the right point, a right juncture, because anyhow the 15th, the 16th over is going to be the batting power play. So maybe this is the right time to start against a new bowler. If you can put him under the pressure, the very first ball, then this over might be a little costly for Geno Dragons. Made costly, in comes the free hit ball. This is in the air, but anyhow, even if he has not timed and catch taken, is still going to be a single. So
that is negated here with a single. A lot of crowd witnessing an epic finals. We have witnessed many epic finals on this SAG ground. Curchorem, this is one of those. Once again played nicely down the ground. He's not afraid to play his shots whenever the ball is pitched up. They cannot bog down. They have to play their shots. At least one of these men cannot allow the game to drift away in the maybe the 19th or 20th over, which can be anyone's game. This time watchfully played, allowing the ball to come onto the bat, not playing the forceful shot at this moment. So if at all anyone will go the hard way with his big shots or trying something different, it's going to be this man, Somesh Prabhudesai. Going for the big one. He wanted to go in Vashi, he ended up in Kashi. So just going to get a single. This is in the air. This might be the important time. Is it going for 6 runs? Oh, what a stunning catch. What an outstanding catch. This is a scorcher. This is not easy, ladies and gentlemen. He was closer towards that rope. I felt that it might go for 6 runs, but he felt that it's my turn to be hero, and he has pounced onto it like a tiger catches his prey. A wonderful, stunning effort from the fielder, and that is the most important wicket in this match. Vikas Desai going back into a pavilion, but nothing to keep his head down. He has absolutely played a stunning innings. Now it's up to the men who are coming in next to take his team home. So a wonderful, wonderful effort in the field has got Geno Dragons, and the golden arm of Shailesh Miskin has done wonders here for Geno Dragons. 105 for the loss of 4 in 13.5. So now in comes the new man. Shailesh Miskin, just like I've said, he has done it in the past for Goa Ranji team and also many other leagues that he plays. Takes wicket at a time, but I think half of the credit should be given to the fielder as well. Shubham Shari. How much pressure will be on him when he sees the rope was so close. It could have gone either way, but it went in towards the Geno Dragon side. In comes Sanjay Naik. 105 for 4, requiring 47 runs in 37 balls. This time watching the ball carefully. So it's immediately getting off the mark with the single, which is also very important during the run chase. At the end of 14 over, a very important breakthrough has been taken by Shailesh Miskin, just conceding 5 runs and getting Vikas Desai back in the pavilion. At the end of 14, it's 106 for the loss of 4. Audience have been enthralled by this wonderful match, the great game of cricket, the leather ball that everyone likes. Well, our stock markets are not witnessing so much ups and downs that we are witnessing in these finals. So many cricket lovers, well, they might be holding the topmost positions as far as cricket is concerned, but they are here for the game of cricket and they are really enjoyed. I feel they are still enjoying. One of them is Rohan Gauns Desai, who is here to watch these wonderful finals, the Secretary of Goa Cricket Association, and will definitely enjoy his time watching these wonderful finals in prospect between Geno Dragons and Curchorem Warriors.
Also, ex-chairperson of Curchorem Municipality, Balkrishna Odarkar, is witnessing this match as a guest, who was as a part of Curchorem Warriors, got few wickets in this tournament. This time nicely played. The fielding needs to be much better than this one. They need to be much quicker. Allowed a single. They need to pile on pressure on Sanjay Naik, which was given away. I feel that this should have been much tighter here, especially against Sanjay Naik, who is quite new onto the wicket. In comes Sagar Uddeshi to be bowling his third over. Very nicely, watchfully played. These 2 overs of Sagar Uddeshi, the man from Pondicherry, is going to be the key in this match. How well he bowls, and if at all he takes up the wicket, if he takes up the wicket, he will rake up the opposition camp. This is a big appeal, big appeal, big appeal. But umpire saying definitely drifting down the leg side. Umpire Ajit Shirodkar, very experienced GCA registered umpire. Well, you can definitely get the appeal when the match is so close. But umpires are the right men. They are the adjudicators. They are like the judges on the field. Oh, magnificent! Outrageous batting. This is super class. Well, at the time when you expect this batsman to play a dot ball, he goes for the full Monty and he gets the full returns. Magnificent hit. A divine hit for Curchorem Warriors at this moment, and I feel they require a new ball as well. Sagar Uddeshi has been taken aback. He was going unabated so far in this tournament, and he had to take a moment to just get back into reality. It's as if a lightning has struck him. That minute. That is Somesh Prabhudesai for you. He is not worried about the man who is going to bowl him from this point or which end. The ball was in the slot and he played a magnificent shot. Always intended to go for the 6. Getting the maximum return. So the ball has been brought back. So wonderful work done by the volunteers. So with this 6, the score moves on to 113 for the loss of 4. The battle rages on. This time nicely played, slightly slower in the air. Yeah, and this is good fight, this is good battle. Just needing 39 runs in 32 balls. We are reaching towards the last of the phase. Once again played nicely in the gap. Smart batting this play, just like how Deepraj Gavkar and Vikas Desai had batted. Somesh is also playing a sensible innings. So at the end of 15 overs is 114 for the loss of 4. And current run rate is also 6.0, and the asking run rate is also 7.60. That's the equation at the moment. Is even Stevens. So one more guest, Mr. Vikas Bhagat, the environment cell convener of Goa Forward Party, has come here, who was there in the opening ceremony as well. So we welcome all our guests witnessing these epic finals. A great battle between bat and ball in Sanguem Cricketers 22nd edition between Geno Dragons of Mapsa Municipality and Curchorem Warriors of Curchorem Municipality. A lot of crowd is witnessing this great match of great uncertainties. So Harshad Gadekar. Once again nicely driven on the leg side. Sanjay Naik looking at the ball, just getting a single. I think the pitch curators and the groundsmen also needs to be applauded. We have seen some wonderful pitches, good bounce, helping the spinners, helping the bowlers, and batsmen also. If they apply their mind, then I think they can get some fruitful returns for their shots. That is what we had witnessed throughout the course of this tournament, right from the first day.
This is a lovely piece of bowling and good, sensible, smart batting here from Sanjay Naik. This is exactly what he has to do. Just getting a single and getting a well-set batsman Somesh Prabhudesai, who is playing on 19 of just 16 deliveries so far. We always thought 150 is going to be a good total for both the sides. A one total which can be defended, a one total which can be chased. Hey! This is a very nicely bowled. So dot ball is going to be like a valued like a gold dust. Well, so important to be bowling dot balls, and also important is going to be the wicket. Only way that Geno Dragons can win is by taking one or two wickets and in a quick succession. Still, Curchorem Warriors, who has super subbed Sagar Gosavi. Once again, very good piece of bowling, going for the big drive in the covers. Two dot balls in a row. Somesh Prabhudesai is not afraid to play the shots, but in return he is giving the dot balls. Really close match, a close encounter. Once again played nicely in the air. Is it going to be a chance taken? This is down the ground. The fielder was inside. A good effort, but ball is going to be the winner here. A risk taken here by Somesh Prabhudesai to go down the ground against Harshad Gadekar, and the risk has paid off. Clean shot, intended to go in the air, and the timing did the rest. So 120 for the loss of 4 in 15.5 overs. And in spite of those dot balls, I think Somesh has come up against Harshad Gadekar because he's got the boundary. So now the field changes. Suddenly, short fine has been taken back towards the deep fine. They are still not unsure about where to set the field to Somesh. Well, so many big names playing in Geno Dragons. Curchorem Warriors, not so big names, but they are showing the big games in the big match. Oh, this is top class. What a pull shot. This is outstanding batting here from Somesh Prabhudesai. Short ball and lovely pull shot. A humongous strike, a magnificent hit. A super shot, you can say, from this man who is taking his team closer towards the target. Well, I am enjoying, I am having a ball out here in the commentary box with such a thrilling contest. At the end of 16 overs, is 126 for the loss of 4. Somesh Prabhudesai, he has been taken as an outstation player, hailing from Shiroda, playing for Curchorem Municipality, and he is playing an innings that a lifetime innings, you can say, in the finals. Well, I will be seeing you off in the presentation arena, and my time is out. And at the point of time, it's 26 runs required in 24 balls. The match is certainly going well poised in towards the Curchorem Warriors side, and it's going to be so 126 for 4 in 16 overs, 26 runs in 24 balls, and it's going to be Sanket Kaukar with further updates. So taking the baby steps here, Curchorem Warriors towards that championship trophy. Wonderful trophy here by Sanguem cricketers. And I think the batting display of this team is so far doing so well that with only 4 wickets in hand, you can certainly favor this side to clinch. But we have seen strange things happening into Sanket Gaonkar.
ओ यहाँ पर जरूर एज लगी थी और बाउंड्री की तरफ रुक करती हुई और ये वेलकम बाउंड्री यहाँ पर पहली गेंद साहिल धुरी अपने आप को इस 17वें ओवर के लिए यहाँ पर लेकर आए थे और मैच धीरे धीरे अपने ओवर खींचते हुए कुर्चरेम वॉरियर्स एक समय लग रहा था जब विकेट गिर था विकास देसाई का, उसके बाद थोड़ी सी बैकफुट पर, लेकिन सोमेश प्रभु देसाई यहाँ पर एक बढ़िया इनिंग खेलती हुए ये मैच विनिंग पारी यहाँ पर क्या अंत तक यहाँ पर लेकर जाएंगे, उसका साथ देने के लिए संजय नायक का ये संजय के नायक के बल्ले से आया चौका। इस बार पटकी हुई गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन बढ़िया ये काम, चौका आया पहली गेंद पर, उसके बाद एक सिंगल और जो इनफॉर्म बल्लेबाज जिन्होंने अब तक कमाल की बल्लेबाजी की है और 29 रन केवल 20 गेंदों में खेलकर ये एक बढ़िया पारी यहां पर आती हुई सोमेश प्रभु देसाई के बल्ले से, उसी के साथ 131 हो चुका है स्कोर एक रन को जोड़कर। कमाल की यहां पर तो फील्डिंग तो जबरदस्त रही लेकिन एक रन जरूर, दूसरा रन जिन्हें यहां पर लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर इस मकाम पर अगर और एक विकेट का पतन होता है तो ये प्रेशर यहां पर बढ़ता जाएगा। अभी भी यहां पर मैच में बहुत कुछ घटना बाकी। 22 गेंदों में 21 रन यहां पर बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और ये दोनों की जोड़ी अब तक कमाल की बल्लेबाजी कर चुके हैं। कमाल का शॉट और एक रन यहां पर जुड़ता हुआ टोटल में, तो 133 कुल स्कोर हुआ है इस एक रन को जोड़कर। 19 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। साहिल धुरी प्रयास, अंतिम प्रयास, यहां पर विकेट अगर 2-3 विकेट अपने कब्जे में कर सकते हैं तो यहां पर ये मैच थोड़ा सा बन सकता है। इस बार दिशा दिखाई सिर्फ गेंद को, वहां पर फील्डर थर्डमैन का खिलाड़ी जब तक की फील्ड करता है एक रन से हो रहे संतुष्ट और जानते हैं अब केवल रन बॉल एक एक करके ऐसा मकाम तक पहुंचना है, विकेट्स अपने हाथ में रखना है और यही काम करते हुए दोनों जानते हैं कि मैच का सिचुएशन क्या है और सिचुएशन से के हिसाब से यहां पर हो रही है बल्लेबाजी। सोमेश्वर संजय, फिर एक बार पटकी हुई गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद पॉइंट का, लेकिन इस बार बढ़िया फील्डिंग, आखिरी गेंद डॉट के साथ साहिल धुरी ने अपनी ओवर कंप्लीट, उसी के साथ 17 ओवर का खेल यहां पर समाप्त। 134 लग चुके बोर्ड पर। अब केवल 18 गेंदे लीगल डिलीवरी बाकी और 18 गेंदों में 18 रन चाहिए, तो यहां पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल डबल करके इस रन को चेज किया जा सकता है, अपने मकाम तक पहुंच सकते हैं और एक बढ़िया पार ही जो एक पार्टनरशिप यहां पर बनी थी। 18 गेंदों में 18 रन, 18 रन से चाहिए, 18 लीगल डिलीवरीज अभी भी बाकी इस मैच में। तो एक समय जब 2 विकेट गिरे थे उसके बाद विकास और दीपराज घावकर के बीच जो पार्टनरशिप बनी तो एक बहुत ही अच्छी बुनियाद अच्छी यहां पर, और यहां पर हमारे गेस्ट आ चुके हैं, स्वागत करते हैं। प्रेजेंटेशन सेरेमनी होंगी, उसके बाद बालकृष्ण हुडरकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं हमारे गेस्ट, तो स्वागत है यहाँ पर। उसके बाद ये आखिरी मैच में जो फाइनलिस्ट थोड़ी ही देर बाद पता चलेगा। 3 ओवर बाकी, 18 गेंदों में 18 रन, थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइंग सीट पर है कुर्चोरेम वॉरियर्स, लेकिन क्रिकेट में एक जब तक आखिरी गेंद डिलीवर न हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर 2-3 विकेट अपने नाम करने में कामयाबी मिलती है तो ये मैच बन सकता है जीनो ड्रैगन्स के लिए। और पहली गेंद पर यहां पर गैप में और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ, कमाल की टाइमिंग, सिर्फ डेलिकेट टच, सिर्फ दिशा दिखाई, वहां पर थर्डमैन का खिलाड़ी अंदर था और
उस गैप में इस गेंद को ढकेला और यहाँ पर 18 रन जरूर चाहिए थे और इस चौके के साथ केवल 14 रन अब बनाने होंगे 17 गेंदों में। बढ़िया ये यहाँ पर रन आउट, जी नहीं, बढ़िया रनिंग और बढ़िया कॉलिंग और उतना ही अच्छा यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ संजय नाइक जानते हैं इस एक रन का महत्व और बढ़िया कॉलिंग उतनी अच्छी यहाँ पर दोनों के बीच जो साझेदारी बनती हुई पनपती हुई एक यहाँ पर साझेदारी की जरूरत थी और इन अंतिम क्षणों में ये बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दोनों ही संजय और सोमेश। बढ़िया इस बार गेंद, लेकिन ये डॉट गेंद, तो पहली गेंद पर जो चौका मिला है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर हटा था। जानते हैं कि ओवर में 6 रन की प्रति ओवर, 6 रन प्रति ओवर की रफ्तार से यहाँ पर आगे बढ़ना है और 5 रन अब तक आ चुके हैं। तो अगर 1-2 गेंद यहाँ पर डॉट जाती है तो अभी बड़ा, इस बार यहाँ पर रन लेना चाहते हैं लेकिन डॉट गेंद। सागर उद्देशी जो पिछले मैच के हीरो रहते हैं, पिछले मैच में 5 विकेट अपने नाम की थे, इस मैच में विकेट का कॉलम जरूर खाली, लेकिन यहाँ पर शॉट्स खेलना, सिंगल अर्जित करना बहुत ही कठिन है क्योंकि एक उच्च स्तरीय गेंदबाज और अपना जो एक्सपीरियंस यहाँ पर पूरा झोंकते हुए, तो आखिरी ये 15 यहाँ पर आखिरी ओवर सागर उद्देशी की। इस बार बैकफुट पर गए थे लेकिन अब गेंद पड़कर उछली, क्या ये कमाल की 3 गेंदे यहाँ पर डॉट, लेकिन जो पहली गेंद पर जो चौका आया था 5 रन जरूर बने हैं इस ओवर में। और इसी के साथ ये चौथी गेंद वहां पर डॉट आती हुई, बढ़िया ये ओवर, केवल 5 रन दिए, उसी के साथ 18 ओवरों का ये खेल समाप्त। इसके बाद 12 लीगल डिलीवरी से आनी बाकी और 13 रन चाहिए जीत के लिए। ये ओवर यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, कितने रन आते हैं, क्या विकेट यहाँ पर आता है, तो किसके पकड़ा भारी होगा इस मैच में। इस ओवर के बाद यहाँ पर पता चलेगा। हालांकि कुरचोरेम वॉरियर्स अभी भी ड्राइविंग सीट पे है, तो 12 गेंदों में 13 रन यहाँ पर बनाना उतना मुश्किल नहीं, लेकिन जो बॉलर यहाँ पर अगली ओवर जिस पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो किस तरह से यहाँ पर बॉलिंग करते हैं, किस तरह के अप्रोच रहता है। बारह गेंदे बाकी, 13 रन चाहिए। तो कप्तान बीच में कुछ सलाह मशवरा करके आए हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से ये जो 12 लीगल डिलीवर्स बाकी उस गेंदों का किस तरह से फायदा उठाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। सोमेश 24 गेंदों में 36 रन, एक बढ़िया यहां पर पारी, जिम्मेदारी थी सोमेश पर, आउट स्टेशन प्लेयर एज खेल रहे और यहां पर विकेट के बाद और पहली गेंद दिशा से बढ़ के वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर, लेग स्टंप से दूर जाती हुई गेंद और उसके बाद अब कैलकुलेशन 12 गेंदे 12 रन, रन बॉल के हिसाब से अब आगे बढ़ना है। और जिस तरह का अब तक का अप्रोच, जिस तरह का पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोमेश खेले हैं, अर्शद घड़ेकर एक बढ़िया गेंदबाज, अभी भी मैच नहीं छोड़ी है, अभी भी यहां पर संघर्ष कर रहे, अभी भी यहां पर कोशिश जारी है कि एक आध विकेट अपने नाम करे।
इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर की लाइन पकड़ी है और सीधी कीपर के पास जाती हुई। तो पहली गेंद जरूर वाइड रही दिशा से बटके, लेकिन जो एक्सपीरियंस जो यहाँ पर जरूरत है कि किस हिसाब से यहाँ पर बॉलिंग करनी है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर रूम नहीं देना चाहते हैं। तो सटीक लाइन यहाँ पर पकड़े है और डॉट गेंद के जो पिछली आई उसी की बदौलत यहाँ पर अब 11 गेंदें बाकी, 11 गेंदों में 12 रन है बनाने। इस बार ये बहुत ही बढ़िया शॉट और यहां पर पॉइंट के ऊपर से खेली गई शॉट। छोटा प्लेन गेंद जरूर थी और यहां पर हाथ खोलने का जरूर मौका, और ऐसे मौकों को दोनों हाथों से बुनते हुए और एक चौका जड़ता हुआ सोमेश अपने बल्ले से, तो और नजदीक यहां पर लेकर जाते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई। उसके बाद केवल 8 रन दूर मात्र इस फाइनल को जीतने से, लेकिन अभी भी संघर्ष जारी। इस बार हवा में जरूर गेंद कहां तक जाती है, क्या फील्डर यहां पर पहुंच पाएगा? जी नहीं, नोमैंस लैंड, लेकिन उसी बीच 2 रन किए हैं दौड़कर कंप्लीट। सात रन आ चुके हैं अब तक का इस ओवर में। अब ये एज लेती हुई, लीडिंग एज लेती हुई वहां पर कहा अच्छा फील्डर मौजूद, थर्ड मैन का खिलाड़ी, सेंसिबल क्रिकेट और दूसरा रन यहाँ पर लेने की कोशिश, और क्या ये यहाँ पर कॉलिंग जानते थे कि थोड़े स्लो थे वहां पर फील्डर, थर्ड मैन का खिलाड़ी, और एक मौका, छोटा सा मौका, उस मौके को तब्दील किया 2 रन में। और अब केवल 4 रन दूर अपनी जीत से, क्या ये चौके के साथ इस इनिंग की समाप्ति करेंगे? क्या छक्का लगाने की कोशिश होगी, क्या सिंगल करके उस मकाम तक पहुंचना चाहेंगे? तो केवल 4 रन दूर और 44 सोमेश का व्यक्तिगत स्कोर। अगर छक्का लगता है तो एक मौका है हाफ सेंचुरी का, क्या छक्के के साथ समाप्ति करेंगे? लेकिन बढ़िया ये संपर्क, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, थर्ड मैन का एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। बढ़िया फील्डिंग और एक रन जोड़ता हुआ टोटल में। अब मात्र 3 रन दूर संजय नायक जिन्होंने बढ़िया साथ था, 9 रन अब तक बनाए, और जो सोमेश को यहाँ पर जरूरत थी कि एक छोर पर एक अच्छी पार्टनरशिप बनी, दूसरे छोर पर एक बल्लेबाज टिके रहे, वही काम किया अब तक संजय नायक ने। और हवा में गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर जरूर मौजूद, क्या एक कैच होगी? और ये यहां पर और एक विकेट का पतन होता हुआ, जमीन पर नहीं से रख सके, हवा में गेंद, और संजय नायक का एक बढ़िया यहां पर पार्टनरशिप बनाई सोमेश के साथ, लेकिन इस गेंद पर वापस जाना पड़ेगा। 49 के स्कोर पर लगा है 5वां झटका। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर सागर गोसावी उतरते हुए मैदान पर, संजय नायक का पिछली गेंद पर जरूर आउट हुए, लेकिन सोमेश नायक का वहां पर एक दीवार की तरह डटे। जरूरत थी कि एक इनिंग, क्विक इनिंग की जरूरत थी, क्योंकि जो पार्टनरशिप जो बनी थी तो वहां पर धीमी पार्टनरशिप बनी थी, तो एक बल्लेबाज को यहाँ पर आकर चौके छक्के लगाने थे, और सोमेश ने वो जिम्मेदारी उठाई, और 45 रनों की ये बढ़िया यहाँ पर पारी खेलकर अभी भी मौजूद है, और केवल मात्र 3 रन इन अंतिम 6 गेंदों में है बनाने। इस साल के सांगेम क्रिकेटर ने जो ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के चमचमाती हुई ट्रॉफी जो है अपने नाम करने के लिए, क्या अभी भी इस मैच में कुछ बाकी? क्या अभी भी यहाँ पर बॉलर जो है
कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो आखिरी ओवर यहाँ पर आती हुई इस मैच की 45 के स्कोर पर अपने व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे सोमेश। एक मौका यहाँ पर अपने 50 तक पहुंचने का, लेकिन केवल 3 रन मात्र दूर जीत से। तो कैसा अप्रोच रहेगा, क्या यहाँ पर करना चाहेंगे सोमेश? लास्ट ओवर आखिरी 6 लीगल डिलीवरी से इस मैच की। और ये यहां पर बहुत ही बढ़िया शॉट, क्या ये 6 रन? जी हां जरूर। और कवर्स की छाव में ये खतरनाक शॉट खेलकर इस मैच को, इस ट्रॉफी को अपने नाम किया। उसी के साथ 50 का आंकड़ा यहां पर पार किया है सोमेश ने। क्या ये बढ़िया कमाल की बल्ला उठा सकते हैं? और सभी टीममेट्स वहां पर बधाई देते हुए एक मैच इनिंग विनिंग पारी, एक कमाल की बल्लेबाजी जो जरूरत थी यहां पर। लग रहा था कि ये मैच जीनो ड्रैगन्स एक मजबूत टीम थे, लेकिन बड़े नाम थे, लेकिन जिस तरह से बड़ा काम कुर्चोरेम वॉरियर्स ने किया है, ये मैच इस स्टाइल के साथ अपने फिनिश की छक्के के साथ, उसी के साथ इस टूर्नामेंट के विनर बने हैं कुर्चोरेम वॉरियर्स। वेल डन, कांग्रेचुलेशन। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी, तो यहाँ पर जुड़ेंगे हमारे सीनियर कमेंटेटर हरीश काकोडकर कुछ ही देर बाद। हॅलो, एक बेल्स म्हाका दिसता कोणे तरी काडल्या एक सायडीची. सो बेल्स आसा ती मातशी कोणाक जर तर मेळ्ळा ताणें मातशी हाडून दिवची. ब्लॅक बेल्स जी आसा ती मातशी हाडून दिवची, कारण ते LED विकेट्स त्यो आनी ताका ती सेन्सर आसा बेल्सीक. म्हणून रिक्वेस्ट करता कोणे जर तर बेल्स मेळ्ळ्या जाल्यार ताणें मातशी हाडून दिवची.
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। परत एकदा ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। Ladies and gentlemen, ऐसे welcome ही to और भी the वीडियोस के presentation लिए ceremony चैनल of को Sanguem सब्सक्राइब Cricketers करो और 22nd बेल आइकन edition. को दबाना बिल्कुल मत भूलो। So requesting the president of Sanguem Cricketers to please ऐसे escort ही और भी the वीडियोस guest के लिए on चैनल stage, को सब्सक्राइब करो और Shri बेल आइकन को Balakrishna दबाना Odarkar, बिल्कुल मत Shri भूलो। Rohan Gaons Desai, and Vikas Bhagat on the days. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को The सब्सक्राइब committee of करो Sanguem और बेल Cricketers आइकन को also to दबाना please come बिल्कुल on the मत भूलो। days and take their positions. Sanguem Cricketers are sincere, grateful ऐसे ही to और भी all the वीडियोस के लिए sponsors चैनल who को have contributed सब्सक्राइब करो immensely और for the बेल success आइकन of को this दबाना tournament. बिल्कुल मत Shri भूलो। Nilesh Kabral, PWD and Law Ministers and MLA of Curchorem Constituency. Shri Subhash Faldesai, ऐसे ही और भी Social Welfare वीडियोस के लिए Minister and चैनल MLA को of Sanguem सब्सक्राइब करो Constituency. और बेल आइकन को Shri दबाना Vijay बिल्कुल मत Sardesai, MLA of Fathoda Constituency and former Deputy CM of Goa. Goa Cricket Association who ऐसे has ही और भी provided the वीडियोस balls के and लिए umpires. चैनल को Goa live सब्सक्राइब cast करो for और live बेल आइकन को broadcast. दबाना Shri बिल्कुल Abhijit मत भूलो। Desai, Punch member of Village Panchayat of Netholim, Sanguem, Goa. Shri Balakrishna Odarkar, ऐसे ही और भी Councillor of वीडियोस के Curchorem लिए Municipality, चैनल को DJ सब्सक्राइब Farms. करो और Shri बेल Prasad आइकन को Naik, दबाना Shri बिल्कुल Naval मत Naik भूलो। of Nanu Angels Private Limited, Shri Jason Pereira, JP Station, Shri ऐसे Supraj ही और भी Shashikant वीडियोस Naik के लिए who has चैनल sponsored को the Winners Trophy, सब्सक्राइब करो और Shri Rupesh बेल आइकन को Ratnakar Naik who दबाना has बिल्कुल sponsored मत भूलो। the Runners Up Trophy, Shri Abhijit Naik, Shri Raghunath Moraskar of Madira Center who has ऐसे ही sponsored और भी water, वीडियोस के लिए Justice चैनल को sponsors Star सब्सक्राइब करो Enterprises और Sanguem बेल Goa, आइकन को दबाना Advocate बिल्कुल Viraj मत भूलो। Nagekar, Shri Kerus Cruz, Councillor Sanguem Municipality, Shri Gopi Naik, ऐसे Shri ही Go और भी वीडियोस के Enterprises, लिए Shri Ame Salelkar, Krishi Kendra, Shri Raviraj Upadhyay, Shri Sangameshwar Naik, Councillor of Sanguem Municipality, Shri Sudesh Salirkar, Shri Krupesh Sapre, Shri Raghuveer Kosambe, Shri Jervis Fernandez of Viha Creations, Shri Ashish Karmalkar, Shri Vishal Bhuimbar, Advocate Ishwar Kuttikar, Shri Ame Kosambe, Advocate Siddesh Tari, Rupesh Naik of Ice Cream World, Shri Lakshman and Pramod Naik who has sponsored Best Batsman and Best Bowler Awards, Shri Durgesh Sangekar who has sponsored the Man of the Tournament Award, Shri Siddharth Marathe who has sponsored the Man of the Final Award. So we are expressing sincere gratitude to Curchorem Cricket Club, Shri Rohan Gaons Desai, Shri Daya Pagi, Shri Vikas Bhagat for their help and support for the tournament. Thank you to all the sponsors from the bottom of our heart. Meanwhile, I'll start the presentation ceremony and so request the President of
सगळे जे प्लेयर्स आसात तांकां रिक्वेस्ट आसा मातशे मुखार रावचें. ऑल द प्लेयर्स विनर्स एंड रनर्स अप जिनो ड्रॅगन्स. सो म्हाका दिसता सगळे प्लेयर्स तशेंच सगळ्यांनी एक बरी सुंदरशी फायनल पळयल्ली आसा. 22वें एडिशन हे 22 सांगेम क्रिकेटर्स. हाजे पयलीं सांग्यार टुर्नामेंट घडटाले पूण कांय कारणास्तव मॅचीस आशिल्ल्यो ग्रावंड मेळना म्हणून हांगा कुडचड्यार आमच्या कुडचडकरांक संद मेळ्ळी की एक बरी सुंदरसो टुर्नामेंट पळोवपाक मेळ्ळो. आनी ह्या टुर्नामेंटाचे सगळे डिटेल्स कशें जाले, कितले त्रास पडले, कशे तरेन तांकां हेल्प केलो. हांव सगळ्यांत पयलीं प्रेसिडेंट तुषार करमळकर हाका रिक्वेस्ट करता ताणें सगळ्यांक येवकार करचो. सगळ्या जमिल्ल्या माझ्या फ्रेंड्स, ऑल द क्रिकेटर्स आनी माचेर आमचे गेस्ट जे आसात, बाब बाळकृष्ण होडरकर जे कावन्सिलर कुर्चोरेम म्युनिसिपालिटी, मिस्टर रोहन देसाई, सेक्रेटरी ऑफ द गोवा क्रिकेट एसोसिएशन, मिस्टर विकास भगत इज द एनवायरमेंटल cell convener for Goa Forward Party, and my colleagues, Mr. Amrish Marathi is the secretary of our club Sanguem Cricketers, and Shaish Mashelkar who is the treasurer. First of all, I would like to welcome all the guests on the dais for making time and gracing this occasion. I'll take this, although this is a welcome speech, I will take some moments and share my experience and walk through the journey of Sanguem cricketers for all of you. We started this club back in 1996 with tennis ball cricket tournament. For around 5 years we organized tennis ball cricket tournament at Sanguem Sports Complex. Thereafter we decided that tennis is not the real cricket, and the real cricket is in fact leather ball cricket. And in the year 2001 we organized our first leather ball cricket tournament, and I'm proud to say that right from the first tournament and today 22nd leather ball cricket tournament plus the 5 tennis ball tournament, I have been actively involved in the club, and I feel very proud of this. The journey to say was not very easy, and to organize such tournaments throughout and without any break with all the hurdles is not difficult. If you have a good team, there may be difficulties, but you can always overcome all the difficulties and go through. This year we have in fact forced to organize this tournament because the ground at GCA Sanguem was preoccupied, and we decided to move to Curchorem, which is our next home. And this is not the first time we have organized this tournament here. Back in 2012 and in 2013, for 2 consecutive years, we had organized this tournament on this very ground. And the support and love that the people of Curchorem have given us, I'm really thankful to them. Then in 2014, our ground, Sanguem ground, was under renovation, and GCA ground was not ready at that point of time, and this ground was also preoccupied. So in 2014 we moved to Fatoda SAG ground. So that shows our resilience. No matter what, whether the ground is available in Sanguem or it is not available in Curchorem, we went to Fatoda, and we had shown the grit that if even there the ground was not available, we were even ready to go to Panjim or even to Porvorim. So I'm not boasting myself, but I just want to
thank all the members who have been part of this wonderful journey of 27 years. And more importantly, the 22 years of leather ball cricket tournament, organizing leather ball cricket tournament was the toughest one. This year also we had very tough time, but with the help of our distinguished guests and other supporters like our MLA Mr. Subhash Desai, the Honorable Social Welfare Minister, and the MLA of Curchorem and PWD Minister Mr. Nilesh Kabral, who has been always behind us. Although we are not from his constituency, he always supports us. And this year we had another great gentleman who came to support us, who is from Fatorda and who has no any connection with us, but still looking at our resilience and our past record, and with the help of my good friend Vikas, he has supported us in a big way in organizing this tournament. I really thank all these peoples and all the other sponsors. The list is very, I cannot take name all, I'm sorry for that. But it has to be mentioned specifically that without the support of the sponsors, such tournament is difficult to be organized. Now Mr. Rohan Desai, as a secretary of Goa Cricket Association, has been very helpful to us. He has provided the cricket balls, the white wonderful cricket balls which you have seen flying all over the ground, are sponsored by Goa Cricket Association, as also the umpires which were officiating, their expense has been borne by the GCA. I am very thankful to Goa Cricket Association, and especially to Mr. Rohan Desai, the secretary. I am very happy that Goa Cricket Association has such a young and dynamic secretary who is very active and taking proactive measures, setting up a lot of infrastructure. Now there is a practice pitches are coming on this very ground. So this type of work has to be applauded. Secondly, coming to this year's tournament, I thank all the sponsors, all the people behind the scene who have worked tirelessly, all the support staff, the ground staff, the umpires, the scorer, the commentator, and most importantly the spectators. Spectators were the charm of this tournament. And once again I welcome you to this tournament, and I think I've taken a lot of time. I once again welcome and conclude my speech. And that speech was coming from the heart. जेन्ना येदो व्हडलो टुर्नामेंट शेगीत 22 वर्सां ताचे पयलीं 5 वर्सां टेनीस बॉल जेन्ना तूं करता तेन्ना ताका कितली मेहनत आसता. एक टिमीक घेवन फुडें वता, ती टीम तुजे बरोबर 22 वर्सां उरपा जाय. थोडे मनीस एड जायत रावता, थोडे मनीस डिलीट जायत रावता, पूण तुजी जी वाटचाल आसता ती केन्ना स्टॉप जायना. कारण तुजें ध्येय एकूच आसता की बाबा लेदर बॉल टुर्नामेंट जो आसा तो घडोवन रावपा जाय. कारण क्रिकेटी खातीर आमी इतले वर्सां करता जाल्यार परत एकदां म्हाका दिसता वॉच टुर्नामेंट बऱ्या रित्या आनी बऱ्या रित्या प्रत्येक एडिशनाक फुडें घेवन वचपा जाय. आनी ते सांगेम क्रिकेटर्सान सामकें बेस्ट रित्या करून दाखयल्लें आसा. आतां आमचे मानेस्त हांगा माचयेर आसात. आतां सगळ्यांचो वेलकम जाल्लो आसा, बरो व्हडलो वेलकम जाल्लो आसा तुषारा कडल्यान. तो आतां आमी फास्ट बुके दिवया सगळ्या मानेस्तांक. सगळ्यांत पयलीं चिरंजीव रायकर हाका रिक्वेस्ट करता, ताणें आमचे बालकृष्ण ओडरकर एक्स चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर कुडचेरी म्युनिसिपालिटी हाका गुलाब दिवन ताचो येवकार करचो. तशेंच फुडले सुवातेर प्रशांत बाब नायक हाका रिक्वेस्ट करता, ताणें धडाडीचे आमचे सेक्रेटरी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे आनी युवा अशे नेते रोहन बाब गांवस देसाय हाका गुलाब दिवन ताचो बी येवकार करचो. तशेंच सिद्धार्थ बाब मराठे हाका मुखार आपयता आनी ताणें एक गुलाब अशी भेटवण नाल्यार एक बुके आमचो विकास बाब भगत हाका दिवन ताचो बी येवकार करचो. तशेंच रोनित नायक हाका रिक्वेस्ट करता, ताणें माचयेर येवन तुषार करमळकर प्रेसिडेंट सांगेम क्रिकेटर्स हाका येवकार करचो. तशेंच फुडले सुवातेर आनंद देविदास हाका रिक्वेस्ट करता, ताणें अंबरीश मराठे
हाका येवकार करचो. तशेंच कृपेश सप्रेश रिक्वेस्ट करता. साईश मालवणकर हांगा बशिल्लो आसा, एक सदस्य आमचो सांगेम क्रिकेटर्स आसा, ताकाय बी गुलाब दिवन ताचो भोवमान करचो. हो टुर्नामेंट तुमकां खबर आसा की कितले उंच स्तराचेर, कारण जेन्ना आमी अशे खुबशे क्लोज डिसिजन्स पळयली तेन्ना कळून येता की इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां बारीक बारीक डिसिजनां कितली इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना मुक्तियार काद्रीले विकेट जेन्ना स्टंप काडली तेन्ना पांय फक्त वयर सकयल इतलें डिफरन्स आशिल्लें आनी त्या स्लो मोशनाचेर दिश्टी पडलें. जर आमचे कडेन नेकेड आय आशिल्लें जाल्यार डिसिजन कितलें डिफिकल्ट आशिल्लें अंपायरा खातीर. आनी टॅक्नॉलॉजीचो यूज वापर म्हाका दिसता सांगेम क्रिकेटर्सांनी सगळ्यांत पयलीं गोंयांत घडोवन हाडिल्लो आसा आनी प्रत्येक पावलार ते हे टॅक्नॉलॉजी यूज करून मुखार व्हरता. आनी हे बारीक बारीक डिसिजन दिसता, पूण क्रिकेटीक म्हाका दिसता जे मानेस्त आमचे बशिल्ले आसा तांकां क्रिकेट स्वता खेळ्ळ्याय बी आनी क्रिकेटीचो सदां तांचो बरोबर वावर आसताच. सो ते बरे रित्या सांगपाक शकतले ह्या टुर्नामेंटा बद्दल. हांव रिक्वेस्ट करतां GCAचे मानाधीक सचीव श्री रोहन गांवस देसाय, जो हांगा भरपूर काम करता, जावं ती पिचीस नाल्यार जावं ते बाकीचे कितले टुर्नामेंट जांकां तो मदत करता प्रत्येक फाटी कुडचड्यार नाल्यार भायर खंय. आनी इनोवेटीव जी वाटचाल चालू आसा GCAची की खुबशे अशे अंडर-19 अंडर-16 टुर्नामेंट चालू आसा. आतां गोवा वुमन्स प्रिमियर लीग फर्स्ट टायम एवर इन गोवा विल बी हेल्ड गर्ल्सां खातीर आनी वुमन्सां खातीर. ताजी फुडाकार म्हाका दिसता विनायक डेकोरेटर्सान डेफिनेटली केला, पूण जो हातभार लागपा जाय सपोर्ट केल्लो आसा गोवा क्रिकेट एसोसिएशन तोय बी तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. सो रोहन, ह्या वेळार तुजी 2 उतरां जावनी. 22nd ऑल गोवा लेदर बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट सांगेम क्रिकेटर्सान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनीक आयज आमच्या मदीं आमचे मित्र बाळकृष्ण ओडरकर, एक्स चेअरपर्सन, तशेंच गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे विकास भगत, तशेंच सांगेम क्रिकेटर्साचे सगळे पदाधिकारी हांगा आयज माचयेर आसा. तशेंच आमचे सगळे हांगचे गांवचे लोक, तशेंच सांगेचे वाठारांतले जितले क्रिकेट प्रेमी आयज हांगा आमच्या मदीं हाजीर आसा, सगळ्याक पांय मोगाचो येवकार. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार सांगेम क्रिकेटर्साचें अभिनंदन, कित्याक खंय तरी तांकां एक कितें तरी डिफिकल्टी आयली, ताजे खातीर खंय तरी ते सांग्यार क्रिकेट हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक शकूना. पूण कुडचडकार सदांच आमी वी वेलकम एवरीबडी विथ ओपन आर्म्स म्हणटा तशें. आमकां क्रिकेट कुडचड्यार जाल्ली जाय आनी बरे लेवलाची क्रिकेट जाल्ली जाय, आनी तुमकां हांगा होस्ट करून आमकांय तितकीच उमेद आनी खोस भोगता. सो ताज्या खातीर तुमचें अभिनंदन करता की तुमी आमच्या ह्या गांवांत येवन येदो व्हडलो टुर्नामेंट आनी इतल्या सगळ्या प्लेयर्सांक हांगा खेळपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. आनी आय एम शुअर की ह्या प्लेयर्सांकय ह्या ग्रावंडाचेर खेळपाक इतलीच उमेद आसतली. जे आउटस्टेशन प्लेयर्स आसा, तशेंच आमचे गोंय राज्याचे स्टेट प्लेयर्स आसा, तशेंच गांवचे प्लेयर्स आसा, सगळ्याक तितलीच उमेद ह्या ग्रावंडाचेर खेळपाक आसता. सो आय एम शुअर की हो टुर्नामेंट नक्कीच एक बऱ्या दर्जाचो आनी एक बरो कॉम्पिटिटीव जालो आसतलो असो हांव खात्री बाळगितां. आयज जशें फायनल्सीक कुडचोरेम जिमखाना वर्सीस जिनो ड्रॅगन्स एक बरी मॅच पळोवपाक मेळ्ळी, आनी स्पेशली आमचे यंग बडिंग क्रिकेटर्स सोहम तशेंच ताज्या बरोबर आमचे सिनियर विकास भाऊ, ताजी आमी गेम पळयली. सो मिक्सचर ऑफ यंग आनी सिनियर एक बरो एक तालमेल आमकां ह्या मॅचींतल्यान दिसून आयलो की क्रिकेट म्हणटा ती आतां खंयच्याच एजी खातीर आनी फक्त भुरग्यांनीच खेळपाची अशें कांयच उरूना. आयज तुमी पळयता आसतले आयज वेटरन्साचें असोसिएशन जालां, वुमन्साचें एक वेगळें लीग सुरू आसा, तशेंच आमचे नॉर्मल यंग क्रिकेटर्सां खातीरय सुरू जाला. सो प्रत्येकान हाजो एक विचार करचो की क्रिकेट हो आतां एक प्रोफेशन जाल्लो आसा, आनी हो जितलो भुरगो आपूण सिरियसली घेतलो आनी सिरियसली खेळटलो तितलीच तो उदरगतय करतलो. फायनान्शियली म्हण बाकीच्योय गोश्टी, जेन्ना तूं एक खंयच्या प्रोफेशनान सक्सेसफूल जाता तेन्ना सगल्यो गोश्टी ऑटोमॅटीक तुजे फाटोफाट येतात. सो हो क्रिकेट पयलीं एक अशें आसतालें की क्रिकेट खेळोन तूं कितें करतलो, म्हयनोभर तो क्रिकेट खेळटलो, स्कूल एकाडमिक्स तुजे पेड्ड्यार जाता, अश्यो काही गोश्टी जाताल्यो. पूण आयज सगळ्या वयाच्या सगळ्या म्हणटा तशें की बायलां धरून दादले धरून भुरगे धरून आयज सगळेच क्रिकेट खेळपाक लागल्या.
आयज खंय तरी डॉक्टर्स एक आपली वेगळी लीग करता, समाजाच्यो एक कसली तरी वेगळी लीग जाता, प्रत्येक कडेन लिगी आमी पळयत आसा. सो क्रिकेट हो आतां एक प्रोफेशनच जाल्लो आसा आनी एक बरी गजाल आसा की स्पोर्ट्स खंय तरी आमकां परत दिता. जेन्ना कितें तरी आपूण लायफान करपाक सोदता आनी त्या खेळाचेर जर ते तूं अचीव करपाक सोदता जाल्यार हेज्याकय बरी गोश्ट कांय जावपाक शकना. सो आयच्या ह्या मॅचीचे जे विनर्स ठरल्या कुडचोरेम जिमखाना तांकां हांव अभिनंदन म्हणटा की बरी मॅच जाली. तशेंच जिनो ड्रॅगन्स इतक्या पयसल्यान ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जाले, तशें बाकीच्यो टिमी ज्यो पार्टिसिपेट जाल्ल्यो तांकांय हांव अभिनंदन म्हणटा की तांणी ह्या टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेट जालो, आपलो खेळ दाखयलो. आनी ग्रावंडाचेर हांव चड कांय उलयना, सगळे आमचेच लोक आसा हांगा. ग्रावंड आमी म्हणजे ग्रावंड तर आमी कांय करपाक शकना. आयज सकाळीं हांव एक फंक्शनाक म्हणिल्लें टॅक्निकल इश्यूज प्रत्येक कडेन आसता. तुमी सगळे जाणा आसतले की हो एसीजीचो ग्रावंड. आतां खंयचोय ग्रावंड एक गव्हर्मेंटाचें आमी कितें करता जाल्यार आमकां एनओसी जाय पडटा. आतां एनओसी नासतना कर म्हणलें, पूण तें तशें एनओसी नासतना करपाकय जायना, कित्याक खंय तरी एक प्रोसिजर म्हणटा तो आमकां फॉलो करचो पडटा. सो एनओसी जर मेळ्ळी जाल्यार हांव आमचे कावन्सिलरूय आसा, गांवचे सगळे लोकय आसा, हांव परत एकदां सगळ्याक आश्वासन दिवपाक सोदता. ज्या दिसाक हांवें पयर रेकी तुमचो टुर्नामेंट चालू आसतनाच आमचे इंजिनियर सगळे आयिल्ले, सगळे विकेट्स 2 टर्फ आनी एस्ट्रो टर्फ घालून हांगा प्रॅक्टीस विकेट करपाक लागून आमची गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची सगळी तयारी आसा. ताज्या भायर आमी एक प्रोफेशनल कोच हांगा ऑलरेडी हायर म्हणजे ऑन रोल घेवन दवरला. ज्या दिसा ही विकेट रेडी जातली, जेन्ना काम सुरू जातलें त्या दिसाच्यान आमी हांगा तो कोचूय अपॉयंट करतले. आतां गोश्ट कशी आसा, आतां ही फीज आतां इतकी वर्सां जाली, आतां 15 वर्सां जाली आसतली काय मायज जाली आसतली. आतां खंय तरी तें रिवॅम्प करचें पडटा आनी म्हाका दिसता हो टायम आसा की इतके वर्साची ती आमची ती तशी पीच आशिल्ली, ताका आतां बाउन्सय ना, ती बॉलय सकयल उरता, मदीं वयर येता, अश्यो काही गोश्टी थंय पिचीचेरय घडटा. सो तो आतां खंय तरी टायम येयला की तो आमी परत एक बरी विकेट रेडी करून आमच्या भुरग्यांक दिवपाची आनी ते आमी अवश्य करतले आनी असोसिएशन अवश्य करतले आनी जाता तितले बेगीन ही भुरग्यांक आमी हांगा सवलत दितले की प्रॅक्टीस करपाक. परत आनी एकदां खोस भोगता आनी ह्या ग्रावंडार रावन उलोवपाकय बरें दिसता. आयज आमच्या कुडचड्या वाठारांतले 6 जाण भुरगे आमचे गोवा टिमीन सिलेक्ट जाले, अंडर 14, अंडर 16. आयज आमी त्या भुरग्यांक पळयता आनी म्हाकाय ती कळ आसा की ते खंय तरी मडगांव वचून प्रॅक्टिसेक वता. पिंटीक खबर आसतलें, खुबशे भुरगे हांगच्यान प्रॅक्टीस करपाक मडगांव वता, पूण ती खंय तरी कळ म्हाकाय आसा. हांव प्रत्येक दिसा हांवूय चिंत्ता की हें केन्ना जातलें आनी हांव कसो तें बेगीन करतलो काय म्हणून. पूण जे प्रोसिजर आसता ते आमकां खंय तरी फॉलो करचें पडटा परत एकदां. पूण हांव नक्की तेज्या फाटल्यान आसा आनी जाता तितले बेगीन तेजेर सोक्षमोक्ष लावन कितें तरी डिसिजन घेवन आमी ही विकेट रेडी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. दुसरे सुवातेर हांव परत एकदां ऑर्गनायझरांचे धन्यवाद म्हणटा, तांकां अभिनंदन करता की तांणी बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आनी हेज्या मुखार हे हाज्याकय बरें आनी मोठे दबाज्यान हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटले तातूंत कांयच शंक ना. आनी म्हाका हांगा आपयलो, 2 उतरां उलोवपाक दिली, हेज्या बद्दल हांव धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरो करूं म्हणटा. थँक्यू. सुंदरसा पॉझिटिव्ह अप्रोच घेऊन आमचो JCAचो मानाधीक सचिव रोहन बाब गांवस देसाय. पूण खूब खंत भोगता. खंत कित्याक भोगता कारण जसो तूंय खेळटालो पयलीं, आमी खेळटाले, पूण जी वाटचाल जी लेदर बॉलाची आसा ती सकयल वचत आसा. कारण लेदर बॉल जे टुर्नामेंट जाताले ते ह्या ग्रावंडार खूब जाताले, तशें सावथ गोवा जाताले, नॉर्थ गोवा जाताले, पण आज दिश्टी पडटा खंय तरी टेनीस बॉल. हांव खंयच्याच खेळाक काय म्हणना, टेनीस बॉलूय तितलोच इम्पॉर्टंट, पूण म्हाका दिसता ओरिजिनल क्रिकेट जी आसा ती लेदर बॉल आनी ती जी संद आमकां दिता पळोवपाक एक बरी बॅटल. आज जर तर तुमी पळयली 1 ओव्हर सागर उद्देशीची, ज्या टायमार 2 विकेटी पडिल्ल्यो आनी दीपराज आनी विकास देसायाक थंय थंड रावन खेळपा जाय आशिल्लें, तांणी इतली सुंदर ओव्हर घाली आनी त्या 6 बॉलान फक्त 6 बॉलान 6 रन आयले, प्रत्येक बॉलाक सिंगल. पूण ते सिंगल कितले म्हत्वाचे आशिल्ले, त्या टायमार कशी बॉलिंग चलताली, कितलो प्रेशर तो हँडल करताले दोगांय बॅट्समॅन, कितले सुंदर रित्या ते खेळ्ळे. हें आमकां टेनीस क्रिकेटींग पळोवपाक मेळना, तें आमकां लेदर क्रिकेटींगूच पळोवपाक मेळटा. आनी इतल्या फायनलीक तांणी दोगांनी बरी इनिंग्स केली. सो तें म्हाका दिसता जर आमच्या दोनी मानेस्त हांगा आसात, एक रिक्वेस्ट आसा रोहनाक, रोहन इतलें काम करता जाल्यार आज टॅक्निकल आनी एस्पेक्ट म्हणटा तो इम्पॉर्टंट जाल्लो आसा. जशें लायव्ह कवरेज, आतां तूं थंय स्टँड पळयता जाल्यार तो स्टँड म्हाका दिसता सांगेम क्रिकेटर्सान हांगा हाडिल्लो आसा.
जर हांगा एक परमनंट जशी सायड स्क्रीन आसा, सायड स्क्रिनीच्या वयर जर तर प्लॅटफॉर्म जालो जाल्यार म्हाका दिसता लायव्ह कवरेज दोनी सायडीच्यान पळोवपाक हांगा स्टँडाची गरज पडपाना. तशें कितें जर तर GCA सायडीच्यान येवपाक शकता नाल्यार तूं कितें हातभार करपाक शकता जाल्यार डेफिनेटली म्हाका दिसता हाजेर वाटचाल जावपाक जाय. कित्याक आज प्रत्येक टुर्नामेंटाक हांगा लायव्ह कवरेज YouTube चालूच आसता, पूण खंय तरी तांकां स्टँड हाडपा पडटा, ते त्रास जाता. सो ते एक रिक्वेस्ट आसा तुजे कडेन जाता जाल्यार. तशेंच पिंटीकूय रिक्वेस्ट करता, जशें लेदर बॉल हांगा कमी जाता. लेदर बॉल पिंटी फक्त लेदर बॉल चडान चड खेळटा, प्रत्येक लिगार खेळटा, MCC खेळटा, PGML खेळटा आनी तो ताजो पयलींच्यान मोग. जसो बॅनरमॅन जेन्ना क्लब आशिल्लो तेन्ना म्हाका दिसता कुडचडे वाठाराच्या कितल्याशा लोकांक संद दिल्ली पिंटीन बॅनरमॅन क्लबाक खेळा, तातूंत एक हांव आशिल्लो आनी अजून पर्यंत ताका तो मोग आसा, अजून पर्यंत तो खेळटा. म्हाका दिसता रायट मॅन हांगा जो आमकां सांगपाक आनी आमकां गायड करपाक. बालकृष्ण अडरकर, एक्स चेअरपर्सन ऑफ CCMC आनी करंट कावन्सिलर. देव बरें करूं हरीश बाब. माचयेर बशिल्ले सगळे म्हजे मानेस्त आनी म्हजे इश्ट, बाब विकास, बाब तुषार, बाब रोहन GCA सेक्रेटरी म्हजो इश्ट, बाब अमरीश, बाब साईश, सांगेम क्रिकेटर्साचे सगळे टीम मेंबर्स वांगडी, बाब सिद्धार्थ मराठे मोठो आसा दिश्टी पडना आसा, म्हजो क्लासमेट म्हणून ताजें चड करून नांव घेता. दोनी टिमीचे प्लेयर्स आनी सगळे क्रिकेट मोगी, तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान नमस्कार. रोहन बाबान सांगलां तशें सांगेम क्रिकेटर्साचें खरेंच अभिनंदन आनी कौतुक, कारण हो असो जो टुर्नामेंट तुमी ऑर्गनायज केला, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टुर्नामेंट आय फील. आनी तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी हो टुर्नामेंट इतलो बरो टुर्नामेंट कुडचड्यार हाडून ऑर्गनायज केला. कुडचड्यार लोकांक सगळ्यांक, नॉट ओन्ली कुडचडें, सांगे, केपें, सावड्डे ह्या सगळ्या लोकांक तुमी एक क्रिकेटीची मेजवानी दिल्या, म्हणून तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. जशें बाब रोहनान सांगलें, हो ग्रावंड आमी आयकलां कुडचड्यार डेवलॉपमेंट जाला. तुमकां सांगपाक 15 वर्सां जालीं हें दुरीग म्हणल्यार तशें आसा हो डेवलॉपमेंट. 15 वर्सां जालीं ह्या ग्रावंडाचें म्हाका दिसता एक कूस हांगचे थंय जावना. पूण रोहन बाब जर तर कितें करपाक मुखार सरता, मुखार सरला जाल्यार ताका मात पॉयंट मारप जाता. पूण तूं कांयच भिनाका रोहन बाब. तुका जर तर हांगा कितें करपा जाय, सगळे गांवचे लोक, सगळे टिमीचे आनी आमी सगळे तुज्या बरोबर आसा. तूं फुडें सर. तूं हांगा आमी कितें करपा आसा आमी सगळे मेळून बरोबर करया. कोणाचे आडमेळे येताले आमी केअर करनाय. कोणाक जर तर मेळपा जाय, SAGक मेळपा जाय, खंय कोणाक मेळपा जाय, आमी सगळे जाल्यार तुजे बरोबर येता, आमी सगळे या. कारण रोहन खरें मनांतल्यान सांगन दिसता, कारण आज पर्यंत GCAचेर खूब जाण गेले, पूण कुडचड्यार इतले टॅलंट आमचे आसा. आज हे बाबडे टॅलंटेड भुरगे GCAन किंवा गोवा खंय खेळटा आशिल्ले, पूण तांकां खंय सपोर्ट मेळूं ना. पूण रोहन आज एक बरें काम करता. GCAचेर ताणें वुमन्स विंग जी आसा ताकाय मुखार काडला. खुबशे यंगस्टर, खुबशे कमिटीचेरूय आमचे कुडचड्या वयले लोक गेल्या. मना काळजांतल्यान देव बरें कर म्हूण रोहन बाबाक. दोनी टिमीची जी फायनल जाली, फायनल म्हणल्यार कशी आसची, दीस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. आज खंयचीच टीम जिखुना आनी खंयचीच टीम हरुना अशें म्हाका दिसता, कारण दोगांयनी इतलो बरो खेळ करून आमकां इतली बरें प्रेजेंटेशन दिलें क्रिकेटीचें, की क्रिकेट म्हणटा तातूंत कितें कितें जावपाक शकता हें आमकां एवरी डे बाय डे आमकां शिकपाक मेळटा. प्लेयर्स लायक विकास, सागर, दिपराज बाब, सोमेश, शैलू, मागीर आमचो सागर उदेशी हांच्यांनी आमचें जें परफॉर्मन्स आशिल्लें, इट वॉज रियली ट्रीट टू वॉच. इतली उमेद येता. वय जालें पूण तरी आसतना मन म्हणटा की खेळ, पूण बॉडी साथ दिना. पूण हांचे परफॉर्मन्स पळयत जाल्यार ल्हानशे जे बाकीचे भुरगे आसात तांणी खंय तरी फुडें येवन तांचे कडल्यान कितें शिकून तुमी मुखार येवचें आनी खेळचें अशें म्हूण दिसता. उलो मारता त्या टायमार आमी आसतले, रोहन आसा, सगळे आसतले. तुमकां कितें हेल्प जालें हांव प्रत्येक फाटी सांगता, कारण फाटीं रावनाकात. क्रिकेटीक लागून आमी सगळे बरोबर आसात, सगळे एकामेकाक हातान हात घालून मुखार येतले. तुषार बाबूसून आसा, कोणाकय खंय कितें हेल्प जाल्यार वी आर देर टू हेल्प. रोहन बाबान सांगलां तशें की ह्या ग्रावंडाचेर आनीकय कोच जाय, कारण हांगचे खुबशे भुरगे मडगांव वतात. टॅलंट खूब आसा कुडचड्यार, पूण मडगांव खूब जाणां वचपाक परवडना, म्हणून बाबडे खंय हांगा थंय बारीकशे प्रॅक्टीस करून करता. सो समज परमिशन मेळटलें आज नाल्यार फाल्यां,
मेळटगीर ह्या ग्राउंडाची कायापालट जातली हातून मात्तूय दुबाव ना अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली कुर्चोरेम वॉरियर्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दीस टीम. इट वॉज अ प्लेजर टू प्ले आफ्टर इयर्स एजीस. प्लेयर्स लायक विकास सागर हांचे बरोबर खेळपाक एक वेगळीच उमेद आसता. थँक्यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दीस टीम. वंडरफूल टीम. त्याच बरोबर अदर विनर्स आय विल से. हॅलो. अभिनंदन करता त्यांना फुडलो जे तुमची खातीर उक्ती आसतली पूण आमचो ग्राउंड सोळा तारखेच्या तशेंच म्हाका दिसता आतां सगळ्यांनी उलोवप जाल्लें आसा. सो म्हाका दिसता फुडले सुवातेर ज्या लोकांनी सगळ्यांनी हांगा हातभार लायलो आसा, हेल्प केल्लो आसा, तांकां सगळ्यांक हांव माचयेर आपयतां. सगळ्यात पयलीं हांव रिक्वेस्ट करतां म्हाका दिसता भगत अंपायर्स जे आसा आनी सुंदर अंपायरींग केल्ली तितलोच तांकां टॅक्नॉलॉजीचो बरो साथ दिल्लो अंपायर्सांक रिक्वेस्ट करतां. निलेश बाब नायक तशेंच अजीत बाब शिरोडकर हांणी मातशें मुखार येवचें आनी आपल्याचें जें मानचिन्ह आसा तें हांगा स्विकार भगत.
कितलीशीं वर्सां कितलेशे एडिशन्स जर सांगेम क्रिकेटर्साचे आमी पळयता जाल्यार हे दोगांय अंपायर सुंदर रित्या काम करता. अंपायर्स इज द टफेस्ट जॉब इन क्रिकेट, नॉट इजी. They have to be absolutely neutral and I think they have been fantastic. अजित बाब शिरोडकर मातसो मुखार यो. तशेंच फुडले सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता आमचो तेंडुलकर, विराज तेंडुलकर मातसो मुखार यो. स्कोरर, ताजें हँडरायटींग सुंदर आसा आनी आतां खंयचे खंयचे टुर्नामेंट जाता जाल्यार विराज तेंडुलकर म्हणटा तो सदांच आपल्या उपस्थिती लायता. स्कोरिंगाचो तेंडुलकर, एब्सोल्युटली. स्कोरिंगाचो सचिन तेंडुलकर म्हणटा तो विराज तेंडुलकर. तशेंच फुडले सुवातेर हांव रिक्वेस्ट करता तुषार करमळकर हाणें फुडलें जें मानचिन्ह आसा तें दिवचें. सगळ्यांत पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता गजानन मसूरकर आनी नारायण मसूरकर, जर तुमी आसात जाल्यार तुमी मातसो हांगा मुखार येवचें. ग्राउंड स्टाफ जर कोण आसात जाल्यार ताणें मातशें मुखार येवचें. ग्राउंड स्टाफ SAG. हांव रिक्वेस्ट करता अंबरीशान ग्राउंड स्टाफाक फुडलें जें मानचिन्ह आसा तें ग्राउंड स्टाफाक अंबरीश मराठेन दिवचें. ग्राउंड स्टाफ. वी गियरान घालनाका, मातसो बेगीन यो. नेक्स्ट हांव रिक्वेस्ट करता गोवा लायव्ह कास्टाचे निखिल डांगी आनी अक्षय खांडेपारकार हांणी रेडी रावचें. हांव रिक्वेस्ट करता बालकृष्ण ओडारकर हांणी फुडलें दिवचें, जें गोवा लायव्ह कास्ट, निखिल डांगी आनी अक्षय खांडेपारकार. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता साईश मालवणकर हाणें आमचे जे कॉमेंटेटर आसा संकेत गांवकर हांकां मानचिन्ह दिवन ताचो सन्मान करचो. बरी एक हिंदी कॉमेंट्री संकेतान ह्या फूल टुर्नामेंटाक हांगा सादर केल्ली. तशेंच हांव रोहन बाब गांवस देसाय हाका रिक्वेस्ट करता फुडलीं दोन मानचिन्ह आसा ती ताणें दिवची. सगळ्यांत पयलीं सागर गोसावी, वन ऑफ द फायनेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ कुर्चरेम, एंड रायट नाव विथ मी इन द कॉमेंट्री बॉक्स. I think there is still cricket left in Sagar. You can do the work on fitness. Wonderful talent, and now as a commentator as well in English. And I guess I am remaining, and I'll take it from the hands of Rohan Gauns Desai as well. हरीश काकोडकर हो एक क्रिकेटीचो गोंयचो आवाज असो जावन आसा, तेज्या खातीर जोरान ताळी जावनी. थँक यू. म्हाका दिसता इट्स टायम टू गो फॉर द प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी. आय थिंक वी आर इगरली वेटिंग फॉर द प्रायज डिस्ट्रिब्युशन. सो मानेस्तांक रिक्वेस्ट करता बसल्या ते मातशे उबे रावया आनी प्रायजां डिस्ट्रिब्यूट करया. जशी एक सुंदर आमी फायनल पळयली जिनो ड्रॅगन्स वर्सीस कुर्चेरेम वॉरियर्स, तसोच फूल टुर्नामेंटूय बरो जाल्लो, पण फायनल म्हाका दिसता चड बरी जाली, चड इंट्रस्टींग जाली आनी चड इंट्रिगींग जाल्ली. ज्या कारणान सगळे युट्यूबाचे व्हिवर्सूय चड आशिल्ले आनी हांगाय जे लायव्ह व्हिवर्स आशिल्ले तेय भरपूर आशिल्ले. सगळ्यांत पयलीं हांव मॅन ऑफ द फायनल, आतां मॅन ऑफ द फायनल म्हाका दिसता विकास बाब भगतान दिवचें. मॅन ऑफ द फायनल काडपाक एक क्लॅश आशिल्ली, दोग जाण बॅट्समॅनांनी सुंदर बॅटींग केल्ली, पूण जसो हांव एनालायज करता आनी जशें आमी डिस्कस केलें जाल्यार आमी क्रिकेट खेळिल्ली आसात आनी म्हाका दिसता
जेन्ना पयल्याच ओव्हरीन 2 विकेटी पडटा जाल्यार ते टीम सदांच बॅकफुटार आसता आनी त्या मोमेंटान जेन्ना एक विकेट आनी वता जाल्यार म्हाका दिसता की सागर उद्देशी ना जाल्यार साहिल दुरी ना जाल्यार शैलेश मिस्किना सारको जर तर बॉलर आसा जाल्यार तो ताजी एडवांटेज घेवन त्या एक टीमीक 100 भितर सुद्दां ऑल आउट करपाची कापासितात दवरता. पूण इतली सुंदर बॅटींग आमी आज पळयली, खरेंच अप्रतीम बॅटींग. कारण ज्या स्तराची बॅटींग आमी इंटरनॅशनल लेवलाक पळयता ती एक इनिंग्स आमी अशी पळयली की जो बॅट्समॅन खरो एग्रेसीव बॅट्समॅन, अटॅकिंग बॅट्समॅन, पूण ताणें आपल्याली जे अटॅकिंग इन्स्टिंक्ट्स आशिल्ले ते खाली दवरले आनी त्या टायमार त्या फेजीक त्या टिमी कडेन वाटचाल लागीं हाडून दवरली. आनी मॅन ऑफ द फायनल वता आउटस्टँडींग बॅटींग टॅलंट ऑफ कुर्चरम विकास देसाय. कारण तो फेज आशिल्लो तो बरोच डिफिकल्ट आशिल्लो. येस, सोमेश प्रभुदेसाय आशिल्लो लायनी भितर, पूण म्हाका दिसता ती वाटचाल जी डिफिकल्ट आशिल्ली ती लागीं व्हरून दिली विकास देसायान सुंदर खेळ करून, आनी त्या खातीर मॅन ऑफ द फायनल हो विकास देसाय. विकास भगत टू विकास देसाय. सगळ्यांचो विकास जावं न्ही. म्हाका दिसता फुडलें जें आसा तें बेस्ट बॅट्समॅन. जशें ह्या फायनली पयलीं जर तर आमी बेस्ट बॅट्समॅन काडपाक गेले जाल्यार बेस्ट बॅट्समॅन तुषार कोणा वेगळ्या मेळटा आशिल्लें. पूण जशें टुर्नामेंट एंड जालो जाल्यार जॉयंट टॉपर जाले दोग जाण. आनी म्हाका दिसता बेस्ट बॅट्समॅन सद्या इतली एडिशन्स जाली, अंबरीश आनी तुषार ग्रावंडा भायर बरी बॅटींग करतात. सो साईश तूं आनी तुषार तिगांयनी मेळून हें बेस्ट बॅट्समॅन प्रायज दिवचें. आनी बेस्ट बॅट्समॅन प्रायज वता एब्सोल्युटली तुषार सावंत. कारण 2 मॅचीन गोल्डन डक करपी फक्त एकच तुषार बाब सावंत आसा, कोण ना ताका लागपी. पूण खरोच बरी बॅटींग केली, दर्जेदार बॅटिंगाचें दर्शन घडयल्लें. आनी सिक्सय पळयल्यो तितल्योच बऱ्यो स्ट्रेट ड्रायव्हय पळयल्यो. मनीस आयलो शिरोडेच्यान पूण घेवन वता प्रायज सांगेम क्रिकेटर्सा कुडचड्यार ग्राउंडार सोमेश प्रभुदेसाय बेस्ट बॅट्समॅन ऑफ सांगेम क्रिकेटर्स विथ अ टोटल स्कोर ऑफ 129 रन्स विथ अ मॅग्निफिसंट 50 इन द फायनल्स एज वेल. हांव ताका शिरोडेचो रणबीर कपूर म्हणटा. बरो बॉलर आनी बरो एक बॅट्समॅन. सो आतां फुडल्या सुवातेर बेस्ट बॉलर हें प्रायज हांव मागता दोनूय मानेस्त जे आमचे आसात रोहन आनी पिंटे दोगांनी मेळून दिवचें ही दोनूय इनामां. विकास बाब भगतान म्हाका दिसता मॅन ऑफ द फायनल दिल्ली आसा, सो तुमी हे दोगांनी प्रायज दिवचें. बेस्ट बॉलर म्हाका दिसना आनी त्या बॉलराच्या मदीं आनी कोण आशिल्लो, खूब फुडें आशिल्लो, डबल विकेटी घेतिल्ल्यो सेकंड रँकाच्या परस. सो अनडाउटेबली द मॅन विथ द गोल्डन आर्म, ज्या मनशान आपल्याच्या स्टेटीक ऑर युनियन टेरिटरीक रिप्रेझेंट केल्लें, सागर उद्देशी विथ अ वंडरफूल spell in the tournament, 10 wickets overall, and he has been adjudged as the best bowler of Sanguem Cricketers 22nd edition. So Rohan Bab Gaus Desai. So Sagar, I think you are a part of this tournament for the first time, and this is considered to be as really a good tournament, high-class tournament where technology is also used, and some good players in the past who had played for other Ranji teams as well played throughout. So how was the feeling playing in this tournament? This was basically the setup and everything was absolutely wonderful. The infrastructure wise also, the wickets, what they played, the rules of the tournament, they are a little challenging, but it makes the game more interesting. So it was really wonderful to be a part of this tournament. And I would thank Geno that they invited me and made me the professional of the team. But the setup, I did not expect this
to be such a big tournament. There is YouTube live going on and everything, and it is really nice to see that on the grassroots level, GCA is also supporting cricket over here. Absolutely, no doubt about it. GCA is supporting the cricket at a grassroots level. And what you felt, the finals was so intriguing, so close. If at all you want to take 1 point out of the book of the leaf as a turning point, then what it is going to be in the finals? What you feel that it will have gone in your favor? I think while we were batting, we played a lot more dot balls compared to what they did. They did not try to hit 4s and 6s, but they were capitalizing on singles. So in our innings, if you see, there were a lot of dot balls. So that has cost us the game, and which we were 10, 12 runs short. And at the end of the day, if we were defending 150 and we went on to the last over, I think our team has done an exceptional job to go to the last over. Yeah, definitely. That's perfectly summarized here. So wishing you good luck in the other tournaments as well. Thank you. So that was Sagar Udeshi there. So now it's time for the man of the tournament. Well, requesting both the gentlemen on the dais to give away the prize and man of the tournament. Well, any guesses? Yes, there were 2 names in contention for the man of the tournament, but there was a long discussion on that with Tushar and Ambarish. The reason for awarding this man of the tournament is one more important aspect, and very, very important aspect of the game of cricket. It is the captaincy part. The person who is definitely the highest scorer of this tournament, joint highest, you can say. But I guess the captaincy in the semi-finals and the finals, and also doing a job of the most toughest job as a wicket-keeper, highest run getter, and being a captain and taking 7 wickets behind, I guess Vikas Desai, you deserve it to be the man of the tournament. Because today's captaincy, if you note, I will tell you from my point of view that he had to use Tushar Sawant in a perfect way that he used. He removed Somesh from the attack, got Tushar Sawant. Then once again he changed and he used his bowlers to absolutely perfect way that he could have done. And that's the reason why that added point was given to Vikas Desai for his captaincy. Vikas, please come on the dais and accept your Player of the Tournament award. तसे सेमीफायनल लुजर्स हांगा प्रायज आसा. रिक्वेस्ट करता वेलिंग क्रिकेटर्स अमेय दामशेकर मातसो मुखार यो from Wailing Cricketers to accept the honors, this trophy of semi-finalist. Requesting Tushar Karmalkar and the other dignitaries, please do it in a joint way. Ameya Damshekar, fine player. So Marud Rising, if anyone is there, Marud Rising to accept the award of this semi-final trophy. No one? Okay, so we'll give them later. So now it's time for the runners-up, Geno Dragon side. The captain, please come fast on the day, Sahil Duri. And then I request the other players as well to come around to take this runners-up trophy. First, medals as well. There are medals as well. मातशें रिक्वेस्ट करता प्लेयर्स मेडल्स आसात सो मातशें बेगीन येयात तुमचो कॅप्टन पाविल्लो आसा सो बाकीचे प्लेयर्स प्लीज मेक इट फास्ट ऑफ जिनो ड्रॅगन्स सो Vardhan Misking, Arshad, Shubham, Ajink, Inad. So all the players are coming one by one. Rahul Kenny. They ended on the losing side. It was the strongest team on paper, but strongest team on ground ended to be the Warriors of Curchorem. आनी म्हाका दिसता आमी हालीं ट्रॉफी चड खूब व्हडल्यो पळयताल्यो
मोठ्यो मोठ्यो 6 फिटाच्यो 7 फिटाच्यो 5 फिटाच्यो ट्रॉफी पळयताल्यो पूण एक कितें तरी वेगळें केलें सांगेम क्रिकेटर्सान सदांच ते वेगळें करपाक तांचें नांव जाल्लें आसा आनी एक सुंदर अशी ग्लास ट्रॉफी एक स्पेशल अशी ग्लास ट्रॉफी जी बरीच जड आसा जे रनर्स अप कॅप्टन साहिल दुर्याक रिक्वेस्ट करतात ताणें माचेर येवचें आनी कॅश प्रायज ऑफ 50,000 रुपीज विल बी अवॉर्डेड टू चिनो ड्रॅगन्स. Yes, one photo with the players, please, of runners up. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता विनिंग जी टीम आसा तशेंच कॅप्टन आनी बाकीचे प्लेयर्स रेडी रावचे आपल्याले मेडल्स घेवपाक. So defending champions are runners up in this 22nd edition. Tashayas Ata, it's now time for the captain and then the players to come for the medals. Yes, Vikas Desai, Sandeep Kudikar, Tushar Sawan played very well, batted very well. Munna, Vicky, Chandresh Desai, magnificent bowling throughout the innings, throughout the tournament. 2 wickets in the finals as well. Rajat Sawant, Sanil Sawant, Somesh, Sanju, Somesh Prabhu Desai, Deep Raj Gaonkar, the flying Gaonkar, and last but not least, Sagar Gosavi. And how can I forget Rohan Gaus Desai? One more player was there in their team who could not play in the finals, though. It is Balkrishna Odarkar, who had picked up 4 wickets, I guess 4 to 5 wickets he has picked up in this tournament. So one more medal for Balkrishna Odarkar. He is a member of Curchorem Warriors team. He deserves this applause. So now it's time for the captain to come forward to take this winning trophy. First, only the captain, and then the team. रोहन कोण बरी फोडटाशें दिसता तुका? एकच नाव घे. चो. तसोच जशे फोटो चलता तसोच अमरीश मराठे आतांच फोकस आसतलो तुजेर, आतांच उलय आनी सोड. वोट ऑफ थँक्स जावनी तुज्या आतांच, कारण मागीर कोण रावपाना, सगळे धांवतले. थँक्यू हरीश बाब. 22व्या ह्या टुर्नामेंटाक तुम्ही सगळे आशिल्ले. आज सगळे उपस्थित आशिल्ले मानेस्ताक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे स्पॉन्सर काब्राल सर, सुभाष सर, तसोच विजय सरदेसाई सर, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तसोच बाळकृष्ण ओडारकर, अभिजीत, ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे जे जर्सी स्पॉन्सर आसा तांकां सगळ्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे कोण हांगा ग्रावंड स्टाफ आशिल्लो तेणे आमकां बरो हेल्प केलो, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यां मोठें म्हणजे कुडचडेकार जे आमकां टुर्नामेंट पळोवपाक आमकां कित्याक बरो हेल्प केलो, तेंचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू.
So 3 cheers to Curchorem Warriors. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hip hip. So wonderful. Finally, it's the end of the Sanguem Cricketers 22nd edition and the presentation ceremony. Sanguem Cricketers members आणि जर्सी घाल्ली आसा ते माचेर या बेगीन. Sanguem Cricketersaचे members जाणी जर्सी घाल्ली आसा ते माचेर यात. So I think it's time for me to say goodbye in this 22nd edition. सगळ्यांक good night, शुभरात्री, शब्बा खैर आणि देव तुमकां सगळ्यांक बरी रात दिवं. It's bye from Hamiresh Kakodkar from this 22nd edition. See you in the 23rd edition in one more exciting tournament from Sanguem Cricketers. So bye for now.